Ingle and Akansha Niture from Maharashtra. I hope you witnessed some fantastic matches. It is amazing to see the kind of matches that we have seen so far. Now I would like to take you to the commentary box where my fellow commentators, Mr. Srinivasan and Shivinder Chaturvedi, would take the proceedings further. Thank you, Dushyant, and good morning, viewers. Welcome to the court number 1 in the parade ground in the lovely city of Dehradun. And we have the coverage coming on the court number 1. In a short while from now, we'll have the women's quarterfinals in the singles. And it will be Amondini Naik of Karnataka will be taking on. And this is Seshadri Srinivasan in the commentary box. And along with me is Shivendra Chaturvedi. Come in, Shivendra. थैंक यू शेषाद्री। बहुत ही खुशनुमा सुबह और टेनिस के मुकाबलों में टीम चैंपियनशिप का हम सभी जानते हैं कि समापन हो चुका है। और ये जो हरियाणा देहरादून में जो परेड ग्राउंड है, इसके ठीक उत्तर दिशा में रमणीक पर्वतीय स्थल है मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता रहा है। और यहाँ पर सिविल सर्विसेज एकेडमी भी है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट देश और दुनिया से यहाँ पर पूरे साल भर पहुंचते रहते हैं। और खास तौर पर गर्मियों के मौसम में और जाड़े के मौसम में जब बर्फ गिरती है, तब तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। और इन्हीं पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में, इन्हीं की तलहटी में देहरादून स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। और एक और खास बात है, 2025 25वां वर्ष है उत्तराखंड की स्थापना का और सिल्वर जुबली ईयर में यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के शेषाद्री एक बहुत ही खुशनुमा माहौल और एक बहुत ही आदर्श माहौल इन खेलों के आयोजन के लिए। Absolutely, what an ambience here in this tennis arena. We go for the toss as you have the chair umpire there and both the players. The mandatory instructions are being given there before the toss of the coin. And this is a lovely view of the court number 1, which comes under live coverage for DD Sports. There you have the chair umpire, Rutraj Basant. There goes the toss. It's heads. Karnataka winning the toss. They got the option to choose the serve of this side. And this is Amondini Naik from Karnataka taking on Aditi Rawat from Haryana. ये सीक्वेंस है आज के दिनों का जो मुकाबले निर्धारित हैं। सबसे पहले अमोदनी नायक कर्नाटका की खेलेंगे अदिति रावत के खिलाफ, जो कि हरियाणा से हैं। उसके बाद दूसरा मुकाबला पुरुष सिंगल्स में इशाक इकबाल सर्विसेज के, उनका मुकाबला होगा नितिन सिन्हा से, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त गुजरात के देव जाविया खेलेंगे द्रोणा वालिया से, उत्तराखंड के खिलाड़ी से। और आखिर में आज का जो महिला डबल्स का क्वार्टर फाइनल होगा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की टीमों के बीच खेला जाएगा। आज के दिन का चौथा और आखिरी मैच होगा। इस समय अपोजिट टू द कैमरा कर्नाटका की खिलाड़ी अमोदनी नायक हैं, जो कि ब्लू टी शर्ट्स में है, और फेसिंग द कैमरा व्हाइट और रेड टी शर्ट्स में अदिति रावत, हरियाणा की सीडेड खिलाड़ी हैं अदिति रावत। और अमोदनी नायक जो हैं वो गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं। शेषाद्री, खास बात यह है अमोदनी 18 वर्ष की हैं, अदिति 17 वर्ष की हैं। और इट इज हार्टनिंग टू सी 2 यंग प्लेयर्स कमिंग ऑन टू द कोर्ट और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए। ये इस मुकाबले के चेयर अंपायर हैं ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत इस मुकाबले का सुपरविजन करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही क्षणों में इस मुकाबले का आगाज होगा। तो हम बात कर रहे थे दोनों खिलाड़ियों की। एक खिलाड़ी अमोदनी विजय नायक कर्नाटक से, सिर्फ 18 साल की खिलाड़ी, और उनका सामना होगा अदिति रावत से, जो कि हरियाणा से आती हैं, चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। ये हैं अमोदनी नायक और ये हैं अदिति रावत। अदिति रावत की खासियत, शी इज अ लेफ्ट हैंडर, वो बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं और 8 साल की उम्र से उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया था। फिलहाल ये दोनों ही खिलाड़ी ITF जूनियर्स में खेल रही हैं और यहाँ पर एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत करके अपने राज्य को एक पदक की ओर ले जाने में अग्रसर होंगी। इस समय नेट के करीब जो खिलाड़ी हैं
वो अदिति रावत हैं, जो कि सफेद और लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स में है। अदिति रावत चौथी वरीयता प्राप्त। ये हैं अमोदिनी विजय नायक, जो कि कर्नाटका से आती हैं। 18 वर्ष की खिलाड़ी, 7 साल की उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन जो प्रेफर्ड सरफेस है उनका वो क्ले है और यहाँ पर हार्ड कोर्ट पर मुकाबले हो रहे हैं। और ये हैं बाएं हाथ की खिलाड़ी अदिति रावत, हरियाणा से चौथी वरीयता प्राप्त, 17 वर्ष की उम्र, 8 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया। ITF जूनियर रैंकिंग 2976 है। पसंदीदा कोर्ट है हार्ड कोर्ट। तो देखना होगा कि जो अमोदिनी नायक हैं वो तो अपने पसंदीदा कोर्ट पर नहीं खेल रही हैं शीनी, लेकिन अदिति रावत अपने फेवरेट कोर्ट पर खेल रही हैं और सीडेड प्लेयर भी हैं। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच जो हेड टू हेड है वो तो एज ऑफ नाउ उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि कभी आपस में खेले होंगे, लेकिन अगर वरीयता की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस, ऑलमोस्ट बराबर। Which means that we will have an even contest in that court number 1. Both are youngsters. It's a great honor to represent their states. And if they win it, it will be great to go on to the semi-finals. Whoever is winning. And it's a question of surface. In fact, I was talking to some of the players about the court conditions. They're pretty happy with all the 4 courts. And the court number 1, it's quite fast. That's what most of the players love, unless you are a clay court specialist. You want the ball to come up and keep on with your baseline rallies. The players are right now warming up in the middle. It's a lovely morning here in Dehradun. And what an ambience, as Shivendra was telling about the backdrop there, Mussoorie. And a wonderful ambience. What a place to be. And very good playing conditions here. And both the players are still knocking. The southpaw from Haryana, the seeder number 4, Aditi Rawat, there she is. Just get into the rhythm and range on the serves and also get into some of the volleys. That is what the all warm-up is all about. And that is one of the reasons when the new balls are given to them, the warm-up session is taken into account. That is why 2 minutes. the change of balls will happen after the 7th game. And thereafter, after every 9 games. That's the chair umpire for you. Rutraj Basant, keeping an eye on timing, Ladies and gentlemen, so that any national moment games, from now they singles will tell quarterfinal their match players to is get best on of with 3 the tiebreak business. sets. The To reward, the left of the lovely chair morning from here. Haryana, Aditi The first Rawat. match of the day in the court number 1, which comes under live To coverage. the right of the chair from Karnataka, And on the picture frame, it's Amondini from Naik. Karnataka, the 18-year-old. must Naik on Amondini the Naik. toss and choose to receive. The chair umpire keeping a close watch. And in fact, the umpiring has been fantastic throughout the tournament. And all the organizers will have to really hats off to them, the way they have conducted this tournament so far. It's a huge challenge for anybody to bring out this level of games, and in Uttarakhand it's happening so beautifully. And both the players are still getting into their rhythm in the warm-up session. It's a very lovely morning here. Slightly the sun is out, but as the day progresses, we have been seeing that it gets colder and colder, and that is how it is. And still a few moments to go for the warm-up session, and it is now Amondini trying to get a range on a serve. That is how it works. 1 minute. This being the first match of the day, fresh, and then trying to come with the match right away for the quarterfinals. There it is. It's all set to begin now. In a short while from now. Now she is trying to get the range and rhythm on her serve. That is Aditi Rawat from Haryana. Oh, that's a class. She is satisfied with the serves, and both the players just getting back onto the chair. And after that, the umpire will, chair umpire will declare them to get on with the game. And a warm up. And a wonderful arrangement, a great ambience. And the coverage comes from court number 1. And this is a chair umpire. And monitoring the event for this match. This is quarterfinals for the women's section. As we are saying that there will be another 2 quarterfinals happening, and then that will be followed by
the doubles semi-finals as well. And that is how it is in this court. There will be 4 matches today. And the players are already back on the court. It's all set here. And it is going to be the player from Haryana on the picture frame, Aditi Rawat, getting ready to serve the southpaw. Aditi Rawat to serve. Ready? Play. There it is. Here we go. $50 love. That's a good rally picking up there. And then Rawat very clearly keeping that placement perfect and winning the point, 15 love. And Amondini is just coming out to the baseline to attack the second serve. And she does it a deep return. That is where the forehand cross court from Aditi just hitting the top of the net and pumping away. That makes it 15 all. Good backhand slice. That is what is forcing, because about slowing down the pace of the rally, so short rally, as the backhand slice was coming in, and Amondini had to come in and went with that backhand cross court. There it is, and dragging it wide. So it's 30-15, second serve. Heavy spin on the serve. 40-15. Oh, that's a very good dragging the opponent from flank to flank. And coming with that very good backhand cross court, stretching the opponent away and picking up that error. 2 game points on that now. 40-15, Rawat. Oh, that backhand cross court from so much stretched. Was always going to be difficult for Amondini. The ball going into the net. With that, Rawat holds her serve and goes up 1 love. Opening set. Shini, I think the best part of tennis events here, what I have found or observed over the 4 or 5 days period, that many youngsters they are coming up, and many established names are also here. But the best part of these national games, tennis events, I found that like these 2 youngsters, they are 17 years, 15 years, 16 years of age, and they are representing their state and trying to excel. Of course, you are not getting any ATP, WTA points, but at the same time, you are playing for your state and bringing glory to the state. Absolutely, it's a great honor for anybody. And it is love 1, and it is Amondini serving. Very good deep serve. Return is fantastic. Love 15. But This kind of return of serve put pressure on any server. Oh, it's a double fault. That's the pressure telling on. She's facing the fourth seeded player. As Shivendra was saying, a lot of youngsters in this circuit now for the national games. Great honor to represent the state and good opportunity to play some competitive tennis. And I'm just reminded of Maya, how she's faring here. Another Sania and Saina are both, 2 of them from Hyderabad. Sania Mirza, Saina Nehwal in badminton. That kind of glory she's going to bring. That's what everybody is looking forward to. जरूर जो हमारे देश में बल्कि बड़ी बड़ी उत्कंठा से हम प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी आए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करे, और मौका है यहाँ पर. जी हाँ, बिल्कुल मौके पर चौका मारा है अमोदनी नायक ने. उन्होंने जैसे ही देखा था कमजोर सा रिटर्न आया था, बैकहैंड पर स्ट्रेच किया था अदिति को और अंक अर्जित किया, लेकिन थोड़ा शी इज इन अ लिटिल बिट स्पॉट ऑफ बॉदर क्योंकि 30 ट्रेल कर रही थी. हालांकि 30 ऑल का स्कोर है. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है ये, बैक हैंड डाउन द लाइन विनर है, ऑलमोस्ट टेकिंग द शेप ऑफ क्रॉस कोर्ट. और
एक गेम पॉइंट उनके पक्ष में आया है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जो कि उनके उत्साह में, उनके मनोबल में वृद्धि करेगा। Absolutely. Game next. Giving some deep returns, that is where she's One able to game pick all. up the error from Rao's racket on the forehand cross court, and with that she holds her serve. The scores level, 1 game all, opening set in this quarterfinals. Look at the last point there, very good deep return, and that is where Rawat made that error. 1 all. But that's long. 15 all. अनफोर्स्ड एरर्स की नंबर, उनकी क्वांटिटी कम करना बहुत जरूरी अगर किसी भी मैच में आपको आगे बढ़ना है तो। अदिति रावत बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं, चौथी वरीयता प्राप्त हैं। 30 नेट all. पर आई थी, कई मर्तबा ऐसा होता है कि नेट कोड आपके साथ दगा करती है लेकिन कई बार फेवर भी करती है। इस बार अदिति को फेवर किया और उन्होंने बहुत आसानी के साथ एक इजी पुट अवे बैक हैंड क्रॉस कोर्ट की शक्ल में। Gave her a lot of time because of the net card. She had enough time to go for that. 40 love. It's a superb serve, clean ace right on the forehand corner. That sets up 3 game points to go up 2-1. She's a 4th seed, Aditi Rawat. This time a good serve down the tee. The return just missing the baseline there. Rawat lead. With her, Aditi Rawat holds the serve and going up 2-1 in the opening set. As the players getting back onto the respective chairs, there will be change of sides. It's a 4-seeded player from Haryana, Aditi Rawat, but facing her Amondini Dominates, another youngster just 18 years of age from Karnataka. But definitely we saw some glimpse of good quality tennis. Both the players have got good serves, and the the court coverage also is good. So there is something really for us to see a good contest. निश्चित तौर पर अमोदिनी से काफी एक्सपेक्टेशंस होंगी, भले ही वो अनसीडेड हैं लेकिन अपसेट करने की कैपेबिलिटी है उनमें, और अगर वो एक 4 सीडेड प्लेयर के अगेंस्ट में अच्छा प्रदर्शन देती हैं तो उनके खुद के लिए भी एक मोरल बूस्टर होगा और नेचुरली उनके स्ट्रेट के लिए भी अच्छी बात होगी कि वो इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करेंगी मेडल राउंड में। थोड़ा सा लेकिन मुश्किल में दिखी थी अपनी सर्विस पर अमोदिनी नायक, और अब दोबारा सर्विस के लिए आएंगी। वहीं दूसरी ओर सीनी अदिति रावत, शी हैज वन निल गेम, 40 लव एंड स्ट्रेट अवे 4 पॉइंट्स। सो एक जो अगर वो कॉन्फिडेंस वाली बात आती है तो इस समय उसमें तो खैर पलड़ा अदिति का भारी लगता है। Amondini had to get her first serve in because you are playing against the 4th seed. There is a good high kicking serve on the body. 15 love. A lot of spin as well. That is where the return going wide. This kind of tactics is important. When you are able to change the the angle in the serve, changing the pace in the serve, I think she has got all those qualities in her serve. Even though she found it difficult to hold the serve on the last occasion, the sun on her eyes now. That is where missing the toss. As we are saying, the first serve gets very important to keep the momentum going. जब भी अदिति ने 15 all. बैकहैंड पर स्ट्रेच किया है अमोदिनी को, उनको तकलीफ हुई है, उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। आप देखें लास्ट पॉइंट पर डबल एंडेड बैकहैंड से रिटर्न का प्रयास लेकिन नेट में उलझता हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक अदिति अपने माइंड में ये योजना भी बना रही होंगी। इस बार बढ़िया डीप सर्विस थी और काफी तेज तर्रार रिटर्न था लेकिन बेस लाइन से पीछे गया लंबा होता हुआ। अमोदिनी 30-15 पर 1 गेम ऑल सर्व पर था लेकिन दूसरा गेम जीता अदिति ने, तो बढ़त फिलहाल उनके पास है। फर्स्ट सर्व का थोड़ा इशू है, एक जो कन्वर्जन परसेंटेज है, कोचेज इस ओर जरूर बात करते होंगे, प्लेयर्स से ध्यान देते होंगे।
30 all. कोई मौका नहीं है अमोदिनी के लिए। तो अदिति की सर्विस पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश है। देखिए एक लॉबिश रिटर्न आया है और लेफ्ट हैंडर आमतौर पर शीनी ऐसा माना जाता है कि दे आर मोर एग्रेसिव। That's the kind of serve she needs. 40 That's 30. a good deep serve on the return going long. Yes, left-handers, one thing is that they always look elegant, and if they play very well, they make it more elegant. That happens in any game, whether it's tennis or cricket or badminton. Game point. Game Again, a 9. good serve. This is what she needs. Two With that, games she all. holds her serve. All the ball. Scores level. 2 games all in the opening set of this quarterfinals for women. The singles quarterfinals to start with in the court number 1, which comes under live coverage. 2-2 की बराबरी इस क्वार्टर फाइनल में महिला वर्ग में। चौथी वरीयता प्राप्त अदिति रावत सामना करते हुए कर्नाटका की अमोदिनी विजय नायक का। ऑन सर्व है एज ऑफ नाउ मामला। Ball. बिल्कुल टी को एकदम किस करने की कोशिश थी इस बार अदिति की, हालांकि कामयाब नहीं हुई वो। ये रॉन्ग फुट करना ही था, पूरा मौका था, अगर नहीं करती तो गलत होता। बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन किया स्ट्रोक का। फर्स्ट सर्व कितनी इंपॉर्टेंट है इसी से पता चल जाता है कि अगर आप उसका कन्वर्जन सही नहीं है परसेंटेज, तो आपकी सेकंड सर्व वीक आएगी, उस पर अटैक होगा। फ्लैंक्स टू फ्लैंक्स, दाएं से बाएं बाएं से दाएं मूव कराते हुए अमोदिनी नायक को अदिति रावत पूरी तरीके से अपने मंतव्य में कामयाब होती हैं। थोड़ा सा जहां मुश्किल में दिखी थी वहां उन्होंने लॉबिश रिटर्न किया जिससे उनको टाइम मिले, और फिलहाल ब्रेक पॉइंट लव गेम की ओर दोबारा से अग्रसर। 3 गेम पॉइंट, पहला गेम पॉइंट 40 ओवर एक्सुबरेंस कह सकते हैं इसे, और पॉइंट क्लोज करना चाहती थी। ऐसा लगा कि बहुत आसान है, लेकिन साइड गैलरीज में गया, तो एक गेम पॉइंट गिफ्ट में दिया है कह सकते हैं अमोदिनी को। Ball ले लो बेटा. Still 2 game points to go up 3-2. Oh, what a drop shot here. This is really going to give a lot of confidence to Amondini. And dropping one more game point here. Now it is 40-30. Good thinking from Naik. She came in. There she is with that backhand slice, slowing down the pace. A good point to win. But still a game point, 40-30. See, that's the pressure telling on the 4th seed after losing those 2 points. Oh, that's a double fault. Yes. Look at it. From 40 love, it is deuce. 3 good points for player from Karnataka, the 18-year-old Amondini Naik. खासतौर पर उन्होंने जो ड्रॉप शॉट खेला वो बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज हम याद करेंगे पिछले दिनों में जो मुकाबले हुए आकांक्षा महाराष्ट्र की, वो यही शॉट खेलने की कई बार कोशिश कर रही थी, हर बार असफल रही थी, और इस समय अपनी सर्विस से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं अदिति रावत। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, ये सराहना करनी होगी युवा अमोदिनी नायक के खेल की कि वो लव 40 डाउन थी और अब एडवांटेज उनके पक्ष में, और अगर श्रीनी ये ब्रेक उनको हासिल हो जाता है तो दिस विल बी अ बिग मोरल बूस्टर। Absolutely. That's what she's looking forward to, the break point here. See, that is where the pressure clearly very much on the server. Aditi Rawat, the 4th seed. Second serve here. No, there is a lot of bounce on that serve, a lot of spin as well. That is where that forehand could not be controlled, and the ball just flying outside the sideline there. It's reduced.
Not hurrying up the serve, the right thing to do when you are under pressure. She had 3 game points. That return of serve set up this point very clearly. Deep return and on the body of the server. So that very clearly setting up a break point. Amondini should go to attack the serve. See the pressure clearly. Second serve. And for Amondini just getting closer to the baseline for the second serve, but surely it's going to be a spun serve. Oh, that's a double fault. What a way to drop the serve. The fourth seed dropping the serve. The break of serve happening on the fifth game. 3-2 lead for Karnataka player Amondini Naik. See, this is called anticlimax. You are leading for 40-0 and then you are losing your serve. और वो भी एक चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एक अनसीडेड प्लेयर के खिलाफ खेलते हुए. लेकिन चीनी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि एक जो प्रेशर है, दबाव है, कई बार अगर खिलाड़ी उसको अपने हेड पे ले लेता है तो वो नेचुरली इट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज और हर गेम. और यहाँ पे हाइलाइट्स इस मुकाबले के अब तक जो गेम्स खेले गए हैं 5 गेम्स. To start first, it looked like it's anybody's game, but then the break of serve. We are just looking for who is going to get the first break of serve, and here it is Amondini Naik breaking the serve of the opponent in the 5th game. Time. These are some good serves, good rallies, but then handling the pressure also matters. When Rawat was having 3 game points and then ultimately dropping the serve, she was coming under clear pressure on that occasion, making those double faults as well, surrendering the serve. The player is just getting back onto the court. It is up a break. The player from Karnataka, Amondini Vijay Naik, getting ready to serve, and she's serving to Aditi Rawat. 3-2 opening set. Can she consolidate that break of serve? Or will Aditi will be able to get a break back promptly? Fault. Oh, what a way to start a double fault. Allow 15. See, the right thing, she went for a spun serve, but just a little long low 15. Good serve. That's completely miscued, not in the sweet spot of the racket there. Love 30 coming under some pressure here. We always say that a break is a break only when you hold the serve that follows. And this is Love 30. Definitely Rawat will be looking for an iota of opportunity to get the break back. Superb serve, but the return was even better. Allow 40. In fact, for a moment, it looked as if that serve will fetch her the point. But now facing 3 break points. An opportunity for the 4th seed to get a prompt break back. Now 40. See, this is where she has to get the good serve. Great players, they come with the best when the pressure is the maximum and when it matters. That's a very good wide serve right on the 15, 40. forehand corner for the left-hander, and after pitching the ball swerving away further. So 1 break point is saved, 15-40. That is still 2 break points. 15-40, 2 break points still. There it is. She has to get the good rhythm and range on the first serve. First serve percentage has to improve. And she's trying to consolidate the break of serve, but under pressure now. That high kicking serve, the return was good, and 3 games here Naik tried to hurry up the return and thereby dropping that serve. The break back of serve happening so promptly. Back on serve now, 3 games all, opening set. राहत की सांस ली होगी अदिति रावत ने कि कमोवेश आसानी से उनको ब्रेक वापस मिला. 50 low. दोनों खिलाड़ी सीने आई कांट रिमेम्बर कि 6 गेम में कभी भी नेट पर आए होंगे. ऑल द टाइम दे आर ऑन द बेस लाइन. और ये हार्ड कोर्ट के खेल की यही खासियत है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टेस्टिंग योर एंड्योरेंस, स्टेमिना, द पावर and the class of tennis serve and volley. Well placed. It is not at all visible on hard court.
I think it's vanishing around the world. I'll come to it a little later. Cut. Oh, that is long. See, talking about this, Sorry, if you King. have to charge the net, come in fast, you need a lot of confidence. You should be able to have a sort of a slow down the pace and then come in. That is not happening. Out. And around the world, now the courts are getting a 48, bit slower. That is why you see less of serve and volley. Even in Wimbledon, the court has got slower now. तो गेम पॉइंट Four. अदिति रावत के पास, उनके पास मौका अपनी सर्विस होल्ड करके बढ़त बनाने का 4-3 के स्कोर से। Cut. ये गेम पॉइंट कन्वर्ट किया अदिति ने, कोई बहुत मुश्किल तेज। नहीं, 4-3 की बढ़त उनको मिल चुकी है। और ऐसा कहना तो मुश्किल है रावत कि leads शी इज ऑन 4 ड्राइविंग games सीट, to 3. लेकिन अगर दोनों खिलाड़ियों के गेम को अब तक एनालाइज किया जाएगा तो अदिति रावत सीम्स टू बी शेड बेटर देन अमोदिनी नायक। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने एक एक ब्रेक एक्सचेंज किया है और सर्विस करने का दारोमदार अमोदिनी नायक के पास होगा। उनके पास मौका होगा कि वो बराबरी मेंटेन करके रखें इस पहले सेट में, क्योंकि अगर यहां पर वो सर्विस लूज करती हैं तो फिर सेट को बचाना ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। ये अमोदिनी नायक हैं आपके स्क्रीन पर। Definitely, what he said is right, because right now it is back on serve after that break back happened. So which means that when Amondini comes to serve, she has to hold the serve. Otherwise, you will see that the opponent will be serving for the open set at 5-3. So it's all the more important for Amondini Naik to hold her serve now, as the players are just getting back onto the court number 1 after the break they get after every odd games. This is down 3-4 opening set. Amondini Naik of Karnataka serving. Certainly the percentage of first service has to go up as you mature as a player. That's wide. It's a good rhythm, and then just trying to go for the lines, trying to go up the line, hitting it wide. 15 love. Down 3-4, 15 love. Naik serving. Very good serve. A lot of pace and also dipping quite a bit. That is what is very important. Pace and depth. Look at that. That is where they return into the net. 30 love. Again, the question of good first serve, that has to improve. Good first serve sets up the momentum. That's a double fault. 30-15. 38-15. In fact, she took pace of the second serve, wanted to go for a high spun serve. The bargain put it into the net. Down 3-4, 30-15. It's definitely important to get a very good first serve. Good deep lob. Oh, that's wide. Trying to change the angle and trying to go for that forehand cross court, dragging it wide. That makes it 2 game points to level the scores. Need to see whether both the players can improve the percentage of first serve. 2 game points here for Amondini Naik. That was a good first serve, but then the return was even better. Deep return, right on the feet of the oncoming server. That makes it difficult to pick up, but still a game point, 40-30.
Oh, what a placement, what a power, what a perfect angle on that forehand cross court. Seeing that the opponent was much behind the baseline, came with that angle is always going to be difficult. There was no depth on that, but it really went away with a lot of pace as well. That makes it views. This is a very important game for Karnataka player, the 18-year-old Amondini, to hold the serve. This is where a little bit of a pressure telling on her. She needs to get a first serve in. Oh, that's just missing the baseline there. That sets up a break point. This is a very crucial game, as you're saying, that if she drops the serve, the opponent will go up 5-3 with her own serve to follow. Now let's see, in her point of view, can she come with a big serve? Not really. She has to sharpen the first serve. The pressure is really telling on her, facing the break point, and it's a second serve as well. Terrific return of serve, setting up that point, a break of serve happening, and that 5-3 lead you have for the fourth seed, Aditi Rawat here, because of that last point. Have a look at that. With that, Aditi will be serving for the opening set at 5-3. That is very crucial game. It was the 8th game. तो इस पहले सेट में 3 ब्रेक हमें देखने को मिले हैं. 2 बार सर्विस ब्रेक की अदिति रावत ने आपके स्क्रीन पर. इस समय 5-3 की बढ़त के साथ वो सर्व कर रही हैं. अक्सर ऐसा होता नहीं जब आप जो सोचते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है. और अमोदनी जरूर कोशिश करेंगी कि वापसी करें इस पर्टिकुलर सर्विस गेम में. अदिति लव 30 डाउन है. Definitely see the 3 break points coming up is very crucial. In fact, she's serving for the opening set and now facing 3 break points. What an irony here. This is called reversal of fortunes. स्ट्रेट अवे एक ब्रेक हासिल होता हुआ अमोदनी नायक को, और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज टेनिस खेली इस पर्टिकुलर सर्विस गेम में. बाकी का काम यानी गलतियां करने का जो जिम्मा था, जो दायित्व था, वो अदिति रावत के पास था. उन्होंने लगातार एक के बाद एक मिस्टेक्स करी. अपनी सर्विस उनकी ब्रेक हुई. तो अब इस पर्टिकुलर सेट में 9 सर्विस गेम में हमें 4 ब्रेक देखने को मिले हैं. अमोदनी के पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो सर्विस अपनी बरकरार रखें और 5-5 की बराबरी हासिल करें. That's what she'll be looking forward to. Both the players really trading break-up serve. Very interestingly, the break back was coming immediately. That is pretty interesting. That is why the scoreboard stays at 5-4 lead for the 4th seed when the players come back onto the court. After that odd game break in the chairs at the moment, when she comes back, it will be Naik will be serving to stay in the opening set, serving at 4-5. As Shivendra was saying, she has to hold the serve to make it 5-all. But you never know the way the match is happening. लेकिन एक बात है शीने कि ये इतने संख्या में अगर सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिलते हैं तो दोनों जो खिलाड़ी हैं उनके कोचेस तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके गेम में कहीं यू आर लैकिंग एज फार एज कंसिस्टेंसी इज कंसर्न. क्योंकि आप अगर फर्स्ट सर्व बेटर करेंगे, अपना गेम बेहतर करेंगे, तभी आप अपनी सर्विस और सर्विस गेम को जीतने की ओर अग्रसर हो सकते हैं. अदिति के साथ ये एक टेंडेंसी देखी है, शी इज लुकिंग टाइम एंड अगेन फॉर कॉर्नर्स, और सिर्फ एक बार वो कामयाब हुई हैं 4 या 5 बार में से. हर बार उनसे मिस्टेक हुई है. आप देखें इस बार भी उन्होंने ट्राई किया फोरहैंड क्रॉस कोर्ट के द्वारा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पॉइंट कंसीड किया. 30 लव. जब आपकी सर्विस, पहली सर्विस बेहतर होगी तो आपको कामयाबी मिलने की ज्यादा उम्मीद है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर.
Definitely the first serve percentage is very important. Good first serve sets the tone for setting up a good point. There it is. Sorry, 15. यहाँ तो बहुत आसान मौका था, फोर हैंड क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट के द्वारा अंक अर्जित किया अपने लिए। कमजोर सा रिटर्न आया था अमोदनी के रैकेट से। तो इस पर्टिकुलर सर्विस गेम में पहली बार स्कोर बोर्ड पर अदिति अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 30-15 अभी भी। क्या बेहतरीन फोर हैंड क्रॉस कोर्ट का सहारा लिया है, कोई मौका नहीं। एक तो लो था, रफ्तार बिल्कुल सही, दिशा बिल्कुल सही, और इस तरीके का स्ट्रोक उनके उत्साह में कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगा Definitely, because she well anticipated that serve and that backhand cross court return of serve. It was really a pleasure to watch. Probably that return of serve putting that pressure mentally on the server there. If you have that kind of a return, it will put anybody into some pressure. There, look at that. Sorry, 40. नाजुक मौके पर डबल फॉल्ट और एक सेट पॉइंट है अब अदिति रावत के पास, क्योंकि वो 5-4 लीड कर रही हैं और 30-40 डाउन है अमोदनी। मौका होगा ये पॉइंट हासिल करें अदिति और सेट अपने नाम करें, कोशिश जरूर करेंगी। लगातार अपनी पहली सर्विस से स्ट्रगल करती हुई अमोदनी विजय नायक, कर्नाटका की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया इजी पुट अवे, पहले बेहतरीन क्रॉस कोर्ट और उसके बाद आसान वॉली विनर। एक ब्रेक हासिल होता हुआ अदिति रावत चौथी वरीयता प्राप्त हरियाणा की खिलाड़ी। हालांकि इस 10 सर्विस गेम में हमें 5 सर्विस ब्रेक देखने को मिले, तो ये भी एक कमाल की बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि 6-4 के स्कोर से अदिति रावत ने इस सेट को जीता है और बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर इस मैच का फैसला होना है विद रेगुलर टाई ब्रेक। तो ड्राइविंग सीट पर होंगी अदिति जब दूसरे सेट के लिए आएंगी, और काफी कुछ विचार विमर्श के लिए रहेगा अमोदनी विजय नायक के पास। ये अदिति रावत है आपके स्क्रीन पर, हरियाणा की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं दोनों ही, और दोनों ने बहुत कम उम्र से टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि अदिति रावत का जो प्रेफर्ड सर्विस है, जो प्रेफर्ड सरफेस है, वो तो हार्ड कोर्ट ही है, और अमोदनी का कहना है कि उनका प्रेफर्ड सर्विस क्ले है। यहाँ पर लेकिन हार्ड कोर्ट पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। हाइलाइट्स पहले सेट की आप तक पहुंचती हुई। कमेंट्री बॉक्स में आगमन हो चुका है दुष्यंत सिंह का। दुष्यंत, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। Good morning, Shivinder. So far we have seen a good match. अभी तक शिविंदर जो मुझे मैच में लगा है कि अदिति रावत का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। उनकी जो स्विंग है, एक्सेलरेशन है बॉल की, बट अगर वो कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर ले तो वो अपने गेम को काफी ऊंचे दर्जे पे ले सकती है। डेफिनेटली उनके जो कोचेज हैं दोनों ही खिलाड़ियों के, वो इस आई बिलीव कि इनके मैच को बहुत करीब से देख रहे होंगे, और खासतौर पर फर्स्ट सर्व का जो कन्वर्जन रेट है, और अदिति के गेम में जैसा हमने पहले सेट के दौरान भी बातचीत हम और शीनी कर रहे थे, तो इशारा किया कि उनकी एक टेंडेंसी थी कि वो शी प्रेफर्स टू गो फॉर काइंड ऑफ एडवेंचरस स्ट्रोक्स। वो कॉर्नर तलाशती हैं और उनसे 3-4 बार गलतियां हुई, तो ये एक अच्छा एक अटैकिंग मोड ऑफ टेनिस कहा जा सकता है कि आप बजाय परसेंटेज गेम खेलने के बिल्कुल बीच में कीपिंग द बॉल इन प्ले, आप कोशिश कर रहे हैं कि राइट और लेफ्ट फ्लैंक्स को तलाशें और प्लेयर को अगर पकड़ें उसके बैक हैंड पर या फोर हैंड पर बिल्कुल कॉर्नर में, तो एडवांटेजेस हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ निरंतरता, कंसिस्टेंसी
और एक्यूरेसी दोनों बहुत जरूरी। ऋतुराज बसंत इस मुकाबले के चेयर अंपायर। चेयर अंपायर दिख रहे हैं अपन को, शायद अमंदनी नायक ने कुछ टाइम आउट लिया है। मेरे हिसाब से कोई इंजरी तो नहीं थी। आदिति रावत इज अ वेरी एडवेंचरस, वो आप देख रहे हैं एकदम आकाश में 38 राष्ट्रीय नेशनल गेम्स का गुब्बारा पूरे देहरादून को दिखाई देता होगा। और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने ऊंचे स्तर के खेल इन्होंने अपने राज्य में कराए हैं और हर फैसिलिटीज को इन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाया है। जी हाँ, ये एक सिल्वर जुबली ईयर भी है उत्तराखंड राज्य का 2000 में जिसकी स्थापना हुई थी। उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा अवसर कहा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो पूरे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में, तो डेफिनेटली एक खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और ये जो फैसिलिटी है जहां पर रैकेट गेम्स हो रहे हैं, परेड ग्राउंड आप सामने देख सकते हैं, 4 टेनिस कोर्ट्स हैं यहाँ पर और इसके ठीक बाईं ओर एक मल्टीपर्पज हॉल है जहां पर आज से टेबल टेनिस के मुकाबलों की शुरुआत हुई है। पहले वहां पर बैडमिंटन इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। अदिति रावत तो कोर्ट पर मौजूद है, लेकिन अमोदनी ने मोस्ट प्रोबेबली टॉयलेट ब्रेक लिया था एंड शी इज बैक ऑन कोर्ट। अदिति पहले से ही कोर्ट पर मौजूद है, ड्राइविंग सीट पर हैं, 6-4 से पहला सेट जीत चुकी हैं। प्रयास उनका होगा कि तीसरे सेट तक मुकाबला न जाए। हालांकि ये काफी कुछ अमोदनी विजय नायक के खेल पर भी निर्भर करेगा। दुष्यंत ये कहते हुए दूसरा सेट आरंभ होने को Fifty-love. अनफोर्स्ड एरर करा अमंदनी ने। 15 लाभ। एक चीज शिवेंद्र मैं देख रहा हूं कि अमंदनी अदिति के बैकहैंड में ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। बहुत अच्छा शॉट अदिति का। खुल के खेलती है, बहुत खुल के खेलती है। ठीक है, परसेंटेज जितना खेलेगी अपना आप इंप्रूव होगा, बट लॉट ऑफ पोटेंशियल। 30 लाख। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था इनसाइड आउट फोरहैंड पर। मेरे ख्याल में उनकी आंखों में धूप आई और कंप्लीटली मिस टाइम हुआ। काफी कम दिखने को मिलता है ऐसा। 40 लाख। तीन गेम पॉइंट हैं अदिति के पास। दूसरे सेट की बेहतर शुरुआत के इरादे से उतरी हैं। पहले गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया है। बढ़िया फोरहैंड क्रॉस कोर्ट, उनका बैकहैंड क्रॉस कोर्ट रिटर्न था जो अमोदनी के फोरहैंड पर आया, लेकिन एक रनिंग फोरहैंड रिप्लाई उनकी नाकामयाब होती हुई। तो अपनी सर्विस को होल्ड किया है अदिति रावत ने, हरियाणा के खिलाड़ी। दुष्यंत आप कह रहे थे कि अमोदनी इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द बैकहैंड ऑफ अदिति रावत। अगर उनको लगता है, कुछ ऐसा नजर आया अब तक के खेल में कि अदिति के बैकहैंड में थोड़े से इश्यूज हैं, क्या वो एक कमजोर पक्ष है, बिल्कुल जरूर उनको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर वीकनेस अदिति रावत के बैकहैंड पे भी देखने को नहीं मिली। शायद जो रिटर्न अगर थोड़ा तेज रफ्तार से और थोड़ा क्लोज टू द नेट आते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अदिति के फोरहैंड पर या बैकहैंड पर भी। फिलहाल अमोदनी सर्विस करेंगी 0-1 के स्कोर पर। बहुत ही अच्छा शॉट फोरहैंड का अदिति का। बहुत खुल के खेलती है, घबराती नहीं है।
अच्छी रैली के बाद एक अनफोर्स्ड एरर अदिति से 15 ऑल। शिवेंद्र, दोनों प्लेयर्स बेस लाइन से काफी कंसिस्टेंट लग रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि कभी नेट पर आकर के किसी दोनों खिलाड़ियों में से किसी ने अभी तक चार्ज किया हो या कुछ चिप शॉट जैसा कुछ खेला हो, क्रॉस कोर्ट खेला हो। तो बिल्कुल बेस लाइन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। 15 ऑल। आदित्य रावत की एक और खासियत नजर आ रही है कि वो जो इनसाइड आउट है, रैकेट का फेस ओपन करके वो जो स्ट्रोक खेलती हैं फोर हैंड पर, वो उनका प्रमुख हथियार लगता है। एंड बाहर जाता हुआ। बहुत ज्यादा नेगेटिव्स देती है। अगर नेगेटिव्स को कंट्रोल करे तो इनका गेम काफी बेटर हो सकता है। 30-15। अमोंदोनी का सर्व में बॉल टॉस बहुत अच्छा है। एक और अनफोर्स्ड एरर। 40-15. कोई जरूरत नहीं थी, बॉल को जितना प्ले में रखे उतना ही अच्छा है। 40-15। और एक और अनफोर्स्ड एरर फोर हैंड में। One बहुत game ज्यादा on, second अनफोर्स्ड set. एरर करती है शिवेंद्र। Roll the ball this side. अभी युवा खिलाड़ी हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके जो भी कोचेस होंगे, आजकल वीडियो एनालिसिस की सुविधा पूरी उपलब्ध रहती है और खिलाड़ी स्वयं भी अपने खेल को देख करके दे कैन एनालाइज कि उनको कैसे इम्प्रूव करना है। तो बहुत ही बढ़िया बैकहैंड क्रॉस कोर्ट लाइन से लगता हुआ। लव 15। आउट बॉल। 50 down. जिस तरह का गेम है आदित्य का, अगर इनकी वॉली भी अच्छी हो तो ये बहुत अच्छे डबल्स प्लेयर भी बन सकते हैं। हाइट है, स्ट्रेंथ है। आउट बॉल। 15-30. 15-30। एक और आउट बॉल। 15-40. लगातार सीरीज ऑफ अनफोर्स्ड एरर देखने को मिल रहा है। इनको अपना माइंड को रीग्रुप करके 2 ब्रेक पॉइंट डाउन है। 15-40। स्कोर बोर्ड सही नहीं दिखा रहा है। फॉल्ट। और ये एक और अनफोर्स्ड एरर। 98 अभी shoot है, मानसिक two on, स्थिति second में set. स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये शिवेंद्र काफी देखने को मिलता है। इवन टॉप लेवल मैचेस में मैंने देखा है कि कभी कभी प्लेयर्स का कंसंट्रेशन जब होते हैं तो एक साथ काफी अनफोर्स चल होता है। जी हाँ, लगातार 2 सर्विस गेम में ऐसा देखने को मिला कि अदिति रावत से बहुत ज्यादा गलतियां हुई और इस पर्टिकुलर सर्विस गेम में तो खैर उन्होंने सिर्फ गलतियां ही की, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी सर्विस गंवाई है और अब 2-1 की बढ़त मिल गई है अमोदनी विजय नायक को, कर्नाटका की खिलाड़ी। तो सर्विस ब्रेक दे आर कमिंग इन प्लेंटी। पहले सेट में 10 सर्विस ब्रेक हमको देखने को मिले। ये इस पर्टिकुलर गेम की हाइलाइट्स। 2-1 की बढ़त है अमोदनी नायक के पास। खिलाड़ियों के लिए ड्यूरिंग द मैच हम देख सकते हैं कि कोई कोच इन दोनों खिलाड़ियों के पास फिलहाल नहीं है। ये जो मिस्टेक्स एक के बाद एक कमिट करी,
अदिति रावत ने और अपना सर्विस गेम गंवाया, साथ ही उनकी सर्विस भी भंग हुई। अब अमोदनी कोशिश करेंगी बढ़त को कंसोलिडेट करने की अपनी, 2-1 से आगे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट अमंदनी का, नेट में अप्रोच करा था पहली बार और बॉल को कंप्लीटली मिसरेड करा। लव 15 लव। नेट कोट लकी 15 ऑल। Sorry, 15. ऑल सेकंड सर्व। अब अमंदनी को कैपिटलाइज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन सेल्फ। शिविंदर ये डबल फॉल्ट उन्होंने कमिट किया है, तो 30 लव आगे थी, 30-15 अभी भी है। लेकिन Sorry, all. अदिति रावत की तो टेंडेंसी है अटैक करने की और लगातार उसका प्रयास करती हैं। इस बार कामयाब हुई क्योंकि एक जोरदार रिटर्न था और रिस्पॉन्स अमोदनी का नेट में। ये तो बहुत ही 40-30. अविश्वसनीय काइंड ऑफ अनफोर्स्ड एरर है, जहां पर आपके पास ये शायद दूसरी बार हुआ है पिछले 2-3 सर्विस गेम में कि इतना आसान मौका था और उसे भी गंवा दिया अदिति रावत ने। एक गेम पॉइंट अमोदनी के पास 40-30। क्या बेहतरीन 4-हैंड क्रॉस कोर्ट ड्राइव लगाया है इस बार अदिति रावत ने। ऐसे ही स्ट्रोक्स की उनसे दरकार है और हालांकि दूसरी सर्विस थी, वीक सर्व थी, अटैक किया था उस पर, लेकिन जब कमजोर रिटर्न आया तो बढ़िया 4-हैंड क्रॉस कोर्ट के द्वारा पॉइंट अर्जित किया। ड्यूस एक डबल फॉल्ट ऑलरेडी आ चुका है अमोदनी नायक के रैकेट से इस सर्विस गेम में। लॉब का सहारा लिया अदिति ने और वो बेस लाइन से पीछे पहुंचा। एडवांटेज अमोदनी नायक के पक्ष में है। उनका प्रयास है कि अपनी सर्विस को होल्ड करें और 3-1 की बढ़त हासिल कर लें। हालांकि प्रेशर उनकी सर्विस पर लगातार बना हुआ है। अदिति कोशिश करेंगी कि जो ब्रेक एडवांटेज है अमोदनी के पास उसे नेगेट करें। पहली सर्विस से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं अमोदनी नायक। एक और अनफोर्स्ड एरर और गेम अमंदनी के पक्ष में। On the board. सेकंड सेट में अब लीड करती है 3-1। Maggie, 3 games to 1, second set. मुझे तो शिविंदर लैप्स ऑफ टोटल कंसंट्रेशन लग रहा है सेकंड सेट में अदिति की तरफ से। इनको रीग्रुप करना पड़ेगा। But फोरहैंड में नेट में जाती हुई 15 बॉल 15 लव। बॉल ट्रैम लाइन पे 50 now. 15 ऑल। एक चीज अमंदनी अच्छा कर रही है कि बॉल को प्ले में रख रही है।
जिससे उसको अपना आप ही पॉइंट्स मिल रहे हैं सारे अनफोर्स्ड एरर्स के, और यही स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए। ये कहते हुए अमंदनी ने बॉल बाहर फेंकी। 15-30। बहुत ही बढ़िया शॉट। जब अदिति अमंदनी को मूव करती है तो उसमें फर्क आता है। अमंदनी का मूवमेंट थोड़ा स्लो है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए। 40-15। बहुत ही बढ़िया शॉट फोरहैंड में। अदिति अपनी जगह ही खड़ी रह गई, कुछ प्रयास भी नहीं कर पाई। 40-30। ये पॉइंट इनको जीतना बहुत जरूरी है। थोड़ी फर्स्ट सर्व की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी इनको। ये कहते हुए एक और डबल फॉल्ट वापस ड्यूस में। शिविंदर, ऐसा लग रहा है कि अभी तक अमंदनी इज प्लेइंग वेल, बट ज्यादातर उनका लीड थैंक्स टू अदिति है, वो पॉइंट्स उनको फ्री में दे रही है अभी तक। बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, काफी अनफोर्स्ड एरर्स इस सर्विस गेम में, या फिर इस सेट में पर्टिकुलरली। पिछले सर्विस गेम सेट के आखिरी सर्विस गेम से सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक लगातार जारी है। ये बड़ा चिंता का विषय है। अदिति रावत चौथी वरीयता प्राप्त हैं, उनके सामने अनसीडेड प्लेयर हैं। लगातार एक के बाद एक डबल फॉल्ट, सर्विस से स्ट्रगल करते हुए। फर्स्ट सर्व का कन्वर्जन रेट बहुत ही खराब। यकायक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लम्प आया है अदिति के गेम में। वहीं दूसरी ओर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमोदिनी ने अपने खेल को सिर्फ परसेंटेज गेम पर सीमित किया है। कोई बहुत फ्लैशी फ्लैम्बॉयंट कुछ स्ट्रोक्स उन्होंने नहीं लगाए हैं। फायदा मिला है, फिलहाल एडवांटेज अदिति के पक्ष में है। ये लॉबिश रिटर्न था फोरहैंड पर, लेकिन साइड गैलरीज में गया। तो बड़े जद्दोजहद, बड़े संघर्ष के बाद ये सर्विस गेम जीतने में कामयाबी अदिति रावत को। अपनी सर्विस उन्होंने होल्ड की है, लेकिन अमोदनी के साथ अच्छी बात यह है कि वो 1 ब्रेक अप हैं इस दूसरे सेट में और 3-2 पर सर्व करने के लिए जाएंगी। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ ऐसा मिस्टेक्स करें एक के बाद एक कि अपनी सर्विस गंवा दें, कोई रीजन नजर नहीं आता। उनका प्रयास होगा कि वो बराबरी हासिल करें, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर इस मैच का फैसला होना है। पहला सेट हार चुकी हैं अमोदनी 4-6 से, लेकिन दूसरे सेट में 1 ब्रेक एडवांटेज है उनके पास। 3-2 से उन्होंने बढ़त ले रखी है। शिवेंद्र, आप तो बहुत टेनिस टूर्नामेंट्स कवर करते हो देश में विदेश में। आपने इतने प्लेयर्स देखे हुए इंटरनेशनल लेवल में, जो अपने युवा खिलाड़ी हैं इंडियन विमेंस की और जो बाहर की युवा विमेंस हैं, क्या फर्क है ऐसा कि अपने बच्चे इतना क्यों स्ट्रगल करते हैं उस लेवल पे? आप उसको कैसे समराइज करोगे? देखिए, आज की तारीख में दुष्यंत एक्सपोजर तो मिल रहा है और ऐसा नहीं कि भारत में टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, पहले 2-3 ATP WTA के बड़े टूर्नामेंट्स होते थे। जरूर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे गेम स्पीच शुरू होता हुआ। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट लंबा होता हुआ बेस लाइन से काफी पीछे। इजी पॉइंट अदिति रावत के पक्ष में। लव 15।
पहली सर्विस परेशानी का सबब है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। बेस लाइन से पीछे हालांकि तैयार थी इस बार अदिति, क्योंकि लॉबिश रिटर्न आ रहा था और ऐसे समय पर उनकी लगातार टेंडेंसी रही है कि वो अपोनेंट के बैकहैंड पर प्रहार करती हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लव 30। इस बार अच्छी सर्विस थी। जैसे ही बॉल और रैकेट का कनेक्शन हुआ, बॉल निकली तो ऐसा लगा कि सर्विस बेहतर है। रिटर्न उस पर वेवर्ड जाता हुआ, साइड गैलरीज को भी छोड़ता हुआ, बिल्कुल कॉर्नर पर साइड गैलरी के। तो पहला पॉइंट है सर्विस गेम में। 15-30। पहली सर्विस की जो स्पीड है वो भी काफी कम। शायद दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात है कि बहुत ज्यादा फॉल्ट पहली सर्विस हो रही है मुझसे। हालांकि रिट्रीवल के लिए भरपूर प्रयास किया अदिति ने और स्ट्रोक खेल भी दिया था, लेकिन उससे पहले ही कमांड आ गया कि ये साइड गैलरीज में है बॉल। तो अब 2 ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए अमोदनी विजय नायक कर्नाटका की खिलाड़ी अपनी सर्विस पर। अदिति रावत के पास सुनहरा मौका है बराबरी हासिल करने का। और ये उन्होंने ब्रेक हासिल कर लिया है अदिति रावत ने, और इसके साथ ही उन्होंने 3-3 की बराबरी भी हासिल कर ली है। तो अगर स्कोर लाइन से जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इवन स्टीवन से ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली है, लेकिन एक एक ब्रेक एक्सचेंज किया दोनों खिलाड़ियों ने। और अब अदिति सर्विस करने के लिए जाएंगी तो उनका प्रयास होगा कि कम से कम अपनी सर्विस को होल्ड करके रखें। पहला सेट उन्होंने 6-4 से जीता है। दूसरे सेट में अगर ये पर्टिकुलर सर्विस गेम जीतती हैं तो थोड़ा उनका मोराल बूस्टर के तौर पर साबित होगा ये। एकदम सही शिविंदर। पिछले सेट में भी ऐसा ही चल रहा था, फिर लास्ट में उन्होंने पुल करा था। इस सेट में देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ से अनफोर्स्ड एरर्स होने लगे। 15 लव। और ये डबल फॉल्ट। 15 ऑल। पहला सर्विस फॉल्ट होता है ना, तभी बॉल मुक्त होता है। सारा खेल परसेंटेज पे होता है। आप कितनी बॉल अंदर रख सकते हो, आपकी फर्स्ट सर्व की परसेंटेज कितनी हाई है। अच्छी रैली अंत में अमंदनी ने बॉल नेट में मारी। 30-15। आप फ्लैशेस में नहीं खेल सकते, आपको कंसिस्टेंट खेलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा शॉट। अच्छी रैली थी, इनमें वापस मिस्टेक करी। 30 ऑल। अदिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये गेम जीत जाती है तो इनका मनोबल काफी बढ़ेगा। इस सेट में ये अंडर प्रेशर रही है, जिससे काफी मिस्टेक्स कर चुकी है ऑलरेडी। Webness.
प्लेयर पीछे से बॉल एक दूसरे को फेंकते हुए 30-40. वापस 30-40. ऐसा लग रहा है कि सारा खेल ही बेसलाइन से हो रहा है. तो जल्दी आ जाएगी. एक ब्रेक पॉइंट फेस कर रही हैं अदिति अपनी सर्विस पर. कमजोर रिटर्न है ये और जाहिर सी बात है बहुत प्रसन्न होंगी अमोदनी नायक जिन्होंने बढ़िया ब्रेक हासिल किया है और फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट होता हुआ. ये देखें आखिरी पॉइंट बैक हैंड क्रॉस कोर्ट बेस लाइन से आप पीछे चले गए हैं. थोड़ा मोमेंट स्लो है तो जो शॉट की जो स्ट्रोक की लेंथ होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए वैसी आपको मिल नहीं रही है. तो कहाँ तो हम दुष्यंत बात कर रहे थे कि अदिति अपनी सर्विस को होल्ड करेंगी और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी. यहाँ उनकी सर्विस ब्रेक हो गई है और अमोदनी के पास सुनहरा मौका है अब कि वो अपनी सर्विस को बरकरार रखें और कंसोलिडेट करें 4-3 की जो उनकी 4-3 की बढ़त है 5-3 पर इसको ले जाएं. उनके लिए बड़ा बेहतर होगा. ऐसा लगता है कि फिर से कुछ मेडिकल इशू है क्योंकि हम मेडिकल पर्सनल को कोर्ट पर आते हुए देख सकते हैं. अमोदनी नायक के साथ कुछ समस्या है. ये आप देखें अभी तक जो मैच आगे बढ़ा है दूसरे सेट में उसकी कुछ झलकियां हाइलाइट्स आप तक पहुंचते हुए. जैसे अपन थोड़ी बात कर रहे थे वुमेन्स टेनिस की वर्ल्ड में और आप जैसे बता रहे थे कि इंडिया में आजकल काफी WTA टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे थे. तो टूर्नामेंट्स अपनी जगह एक चीज होती है और जो खेलने का स्तर होता है बच्चों का जो अपन टेंजिबल्स की बात करते हैं उसमें अपने बच्चे कितने पीछे हैं और इसकी जो बात है इसको कैसे चेंज करा जा सकता है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इम्प्रूव्ड नो डाउट. लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं जो एक पर्टिकुलर एक छोटी जगह से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कल एक खिलाड़ी हैं देव जाविया जिनके बारे में बात हो रही थी जो टॉप सीडेड हैं और वो अंकलेश्वर गुजरात में एक ऑयल फील्ड के लिए जगह जानी जाती वहां को बिलोंग करते हैं. जब थोड़ा बहुत उनके गेम को देखा गया तो विचार हुआ कि अंकलेश्वर में तो सुविधा उपलब्ध है नहीं तो इसलिए आपको बड़ौदा जाना पड़ेगा. जब वो बड़ौदा गए तब हुआ कि नहीं बड़ौदा से बेटर फैसिलिटी अहमदाबाद में है. तो आपको अगर अपने स्किल्स को होन करना है तो एज कंपेयर्ड टू मेनी यूरोपियन कंट्रीज या इवन ऑस्ट्रेलिया हम बात करेंगे या USA में वहां पर हर विश्वविद्यालय या फिर उससे भी नीचे के लेवल पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो दे आर इन प्लेंटी और वहां पर खिलाड़ी बड़ी यंग एज से उन फैसिलिटीज पर खेलना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरीके का दबाव नहीं होता कि आपको कोई कंस्ट्रेंट है कि आपको ट्रैवल करके जाना है 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर. मेरे ख्याल से ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं और एक सपोर्ट हर लेवल से चाहे वो पेरेंटल सपोर्ट है. हम सभी जानते हैं हम इंडियन जो सोसाइटी है वहां पर आज की तारीख में भी स्टडीज आर पैरामाउंट. स्पोर्ट्स प्रायोरिटी शायद टॉप प्रायोरिटी तो बिल्कुल भी अभी भी नहीं बना. धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और शायद यही कारण है कि पहले हमने जो आजादी के बाद से देखा महिला टेनिस की बात करें तो 2-4 खिलाड़ी होते थे. निरुपमा वैद्यनाथन थी, रश्मि चक्रवर्ती थी, कुछ खिलाड़ी इस तरीके से उभर करके आए लेकिन सानिया मिर्जा एक आइकॉन बनी भारतीय महिला टेनिस में. और आज की तारीख में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो
एक पर्टिकुलर लेवल जब वो अटेन कर लेते हैं, उसके बाद वो उनका प्रयास होता है कि विदेश में जाकर के वो कोचिंग ले और वहां पर अपना बेस बनाएं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो एक फिजिकल बिल्डअप है और ये एंडोरेंस और स्टेमिना जो खासतौर पे हार्ड कोर्ट पर बड़ा मायने रखता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा कहीं 19 साबित होते हैं। तो एक दो फैक्टर तो नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स मुझे लगता है इसमें अकाउंट फॉर करते हैं। कोर्ट पर इस समय मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अमोदिनी नायक को। संभवतः हैमस्ट्रिंग के साथ कुछ उनका इश्यू है, और अगर ऐसा होता है, हैमस्ट्रिंग इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, अगर ऐसा कुछ होता है बहुत मुश्किल होगा अमोदिनी के लिए इस मैच को कंटिन्यू कर पाना। हालांकि उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, दर्शक उत्कंठा के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैच शुरू हो। ये टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, बट अगर टेयर होता है तो फिर इसमें थोड़ा लंबा इलाज होता है इसका वापस हील होने का। शिवेंद्र, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे अपन को सबको मालूम है हर रैकेट स्पोर्ट में 4 क्राइटेरिया होते हैं, टैक्टिकल, टेक्निकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। जहाँ टेक्निक का सवाल होता है और अपन देखें जो इंडिया के अच्छे प्लेयर्स हुए हैं टेनिस में, उनकी टेक्निक कोई नहीं टच कर सकता, विजय से, लिएंडर से, महेश से। अपना फिजियोलॉजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बायोलॉजिकल। वही मैं एक्चुअली उसी चीज का मैंने जिक्र किया जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो एंड्योरेंस, जो स्टेमिना और एक जो बिल्डअप है और जो एक ग्रोथ है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो किसी भी खिलाड़ी की या किसी पर्टिकुलर कंट्री के खिलाड़ियों के आगे बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि खेल दोबारा से शुरू हो रहा है एंड अमोदिनी इज बैक ऑन कोर्ट लीडिंग 4-3। बहुत ही बढ़िया शॉट अदिति का। अमोदिनी हिल भी नहीं पाई शॉट रिटर्न के लिए। बॉल पे वेट करना था, जल्दी नहीं थी, उसको नेट में जाके ओपन रैकेट से ड्रॉप करना चाहती थी। वेरी डिफिकल्ट शॉट, शी कुड हैव वेटेड एंड डन एनीथिंग विद द बॉल। दोनों प्लेयर बेस लाइन से एक दूसरे को पुश करते हुए। फिफ्टीन 30। डबल फॉल्ट। 15-40। एकदम स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, सर्व के बाद अपने पैर को हिला रही थी। इसका मतलब शी इज ट्राइंग टू रिलैक्स हर लेग, जहां इनको इंजरी फेस हुई है। अच्छी रैली। 40. अमोदिनी ने थोड़ी सी टैक्टिक चेंज करी है, बॉल को ज्यादा लूप कर रही है वो, तो रिकवर कर सके, टाइम मिले उनको।
प्लेइंग स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर शी इज कैरिंग इंजरी विद हर। सर्व में स्पीड बहुत कम हो गई है। और ये डबल फॉल्ट के साथ अब स्कोर बोर्ड सेकेंड सेट में 4 बराबर। तो ब्रेक हासिल किया है अदिति रावत ने, चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। सामने है अमोदनी विजय नायक, कर्नाटका की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी। जैसा हम कह रहे थे कि पहले सेट में भी 5 सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिले थे और दूसरा सेट भी उसका अपवाद नहीं है। मल्टीपल ब्रेक्स यहां भी हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल 4-4 की बराबरी। फ्लैंक्स टू फ्लैंक्स प्रयास करती हैं अदिति रावत। उनके सामने मौका है कि देख रही हैं कि उनकी अपोनेंट अभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर के आई हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, कंसोलिडेट कर सकती हैं। लेकिन एक के बाद एक मिस्टेक्स। बढ़िया रिटर्न था इस बार बैकहैंड पर, डीप रिटर्न और बेस लाइन पर स्ट्रेच किया। अमोदनी चूंकि लेफ्ट हैंडर हैं, उनके फोरहैंड पर आई थी, लेकिन वो भी अदिति माफ कीजिएगा लेफ्ट हैंडर हैं, उनके फोरहैंड पर आई थी, वो भी नेट में गया रिटर्न। लेकिन ये क्या खूबसूरत शॉट है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिख रहे हैं। वही मुझे मैं जैसे बोल रहा हूँ, अदिति रावत का पोटेंशियल बहुत हाई है, बट वो अपने गेम में बहुत ज्यादा अनफोर्स्ड एरर्स कर रही है। और ये एक और अनफोर्स्ड 15-40। शिवेंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों खिलाड़ी अपने सर्व जीतना नहीं चाहते हैं। गेम उल्टा चल रहा है। अपन ब्रेक यहाँ सर्व ब्रेक की बात करते हैं। 15-40 यानी 2 ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए अदिति रावत। बहुत लंबी होती हुई पहली सर्विस उनकी। बहुत ही इरेटिक परफॉर्मेंस है दोनों ही खिलाड़ियों का। और आप देखेंगे मौके पर, ऐसे मौके पर डबल फॉल्ट, अविश्वसनीय खेल। लगातार एक के बाद एक सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिल रहे हैं। वो एक कंसिस्टेंसी का सर्वथा अभाव है इन दोनों खिलाड़ियों के खेल में। 5-4 की बढ़त मिल गई है अमोदनी नायक को और वो सर्व के लिए जाएंगी तो उनका प्रयास होगा कि जो पहले सेट का स्कोर था 4-6 उनके अगेंस्ट था, अब उसको वो रिवर्स ऑर्डर में अपने लिए ले आए, यानी 6-4 से पहला सेट जीतने का प्रयास करें। बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर इस मैच का फैसला होना है। अगर अमोदनी ये सेट जीतती हैं तो उनके पास मौका होगा कि वो तीसरे सेट में मैच को ले जाए और फिर निर्णायक मुकाबले तक पहुंचाएं। ये हाइलाइट्स तो बहुत आसान अवसर था अदिति रावत के लिए। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, काफी अनफोर्स्ड एरर कमिट करी अदिति ने, जिनमें से एक ये लास्ट पॉइंट देखा आपने। तो अब 5-4 की बढ़त है अमोदनी के पास। एक और बॉल बाहर। 15 लव। आउट बॉल। 15 आउट। 15 बराबर।
Sorry, 15. बोल रहे इस सर्विस गेम में केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अमोदिनी ये सेट जीतेंगी या फिर अदिति जीत तो हासिल कर नहीं सकती इस सेट में, तो बराबरी हासिल कर सकती हैं। बेसलाइन से पीछे अच्छी रैली थी और मौका था अमोदनी के पास एक बढ़त लेने का, गेम पॉइंट पर पहुंचने का, गंवाया उन्होंने। फोरहैंड उनका लंबा होता हुआ। कुल मिलाकर के उन्होंने दोनों फ्लैंक्स में मूव कराया था अदिति को। Very close for me the box. बहुत बार ऐसे प्रयास किए गए हैं अदिति रावत के द्वारा कुछ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देने के, इस बार उनको कामयाबी मिलती हुई। तो एक ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए अमोदिनी नायक अपनी सर्विस पर। बहुत ही अच्छा शॉट, और अपन ने देखा किस तरह से फिस्टिंग उन्होंने करी है लेफ्ट हैंड से। अपने आप को इनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा अमोदिनी नायक को। 2 पॉइंट दूर है इस सेट से, सेट को लेने के लिए। एक और बॉल बाहर। पॉइंट अमोदिनी को नाउ इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा इस मैच को एक सेट बराबर में लाने के लिए। अच्छा खेल रही है, सारे बॉल्स को प्ले पे रख के सारे अनफोर्स्ड आ रहे हैं दूसरी साइड से। Fault. ड्यूस, अच्छी रैली। अदिति के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हुए एक और बैकहैंड में अनफोर्स्ड सेट पॉइंट। इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा अमोदिनी को। बहुत ही अच्छी शॉट, और ये सेट अमोदिनी को एक बराबर। शिविंदर ये थर्ड सेट में जाएगा। अब सारा जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, पहला सेट हारी अमोदिनी नायक 4-6 से, लेकिन दूसरे सेट में बिल्कुल आइडेंटिकल स्कोर पर 6-4 से सेट जीत लिया। 1-1 की बराबरी है। बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर मैच का फैसला होना है। हालांकि मेडिकल ब्रेक लिया था अमोदिनी ने, लेकिन बाद में उनके खेल में ऐसा कुछ देखने को लगा नहीं।
और अदिति ने एक के बाद एक मिस्टेक्स की हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है कि वो ये सेट उन्होंने लूज किया है। अन्यथा ज्यादा एक पावर पैक परफॉर्मेंस उनका हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये हाइलाइट्स इस दूसरे सेट की आपके लिए। और कमेंट्री बॉक्स में अब दुष्यंत को ज्वाइन करेंगे शेषाद्री श्रीनिवासन। तो दुष्यंत, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, ऑफकोर्स फिजिकल फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दोनों खिलाड़ियों में कम गलती करेगा वो जीत जाएगा। एकदम सही बोला आपने शिवेंद्र। And there we see the highlights of the second set. Both the players slugging it out, and there you see Amondini happy to win the second set. Like to welcome Sridhar Srinivasan on the commentary box. What a long match. Where do you see this match is going, Sri? Normally, you safely say it's anybody's game, but what I can look for is whenever somebody is taking the second set, the momentum will be in favor of that player. So it's quite possible that she came back after that medical attention, Amondini Dominates, and she's playing against the fourth seed. But good number of unforced errors are coming from the fourth seed, which she is rightly capitalizing. And her first service also has improved, and the confidence level has improved. So in my opinion, maybe a slightly better chances the player from Karnataka may have, but you never know whether the Haryana player can come back. As players are back on court, Aditi is serving. See, this kind of errors, in fact, quite a few have come from Aditi racket also in the second set we saw. And she also dropped the serve early. Love 15 to set a set. Oh, that's a very nice drop by Amondini. I just feel Amondini just needs to keep the ball in play. Rest will follow if Aditi follows the same trend of playing. Look at that net caught. That also gave enough time for Amondini. 15-30. Aditi has lovely hands, very free-flowing hands, but committing too many errors at this level. Again, trying to hurry up the close at the point early. That is where that first error coming from Aditi's racket. There you are. And I think that she has to focus quite a bit on that. Good serve. See, that's what I said. She comes with brilliance, flashes of brilliance, then a lot of negatives. She needs to get a game put together. That's Aditi serving. Fault first serve. Facing a break point, she needs a good serve. Out. That's long. And that's Okay, next. again a break in the very first game of the third set. I think in the second set, she has not even held a serve once. And the trend just carries on with one set each. 4-6, 6-4. That early break of serve will give a lot of confidence to Naik. It always happens. As we are saying, she had the second set with her and now already started with the break of serve. That is where the momentum sometimes helps. When you come back onto the court, winning the second set. But what I like about Amondini, she's playing within her limits, trying nothing fancy. She knows that if she just keeps the ball in play, the difference will come, and that's exactly what is happening. And she's also not in the best of physical condition right now.
Still, I think that medical attention helped her a lot. Up a break. That is a lovely return of serve. As I said, she plays very well in flashes. Love 40. Unforced by Amondini on the backhand. Love 30. You know, Shri, I find the players are struggling from that side to hold their serve. Is it due to the sun factor? I really won't think so, because when you're serving from this side, the sun is directly on your eye. There, I think maybe a little bit of pressure. She had a break of serve and anxiety to consolidate the break. Oh, that's a lovely shot by Amondini. Nice 15, deep. 30. Amondini has got nice clean hands. That's a wonderful Pretty all. shot on the backhand. What I like about her, Shri, that she's playing the lob, not exactly lob, she's looping the ball in order to recover her position. And then when she sees an opening, she goes for a shot. There you are. You can see that in the replay. And that's a beautiful shot. That is where she was pumping her fist with that good backhand cross-court winner. Very good serve right on the 40. backhand corner. Kicking up a bit as well. That is where the return error there. That gives a look at the serve. Perfect angle and kicking a bit. That sets up a game point to consolidate that early break of serve. There it is. The return going long. No, that was the right ball. It's a deuce. Yeah, that is where a little bit of a close look Amondini had. The ball actually just landed on the line, deuce. Trying to generate a pace on that forehand cross-court, seeing opponent is behind the baseline. Trying to hasten it and hasten the pace on the rally. Look at that, good thinking, but no control on that forehand cross-court, dragging it wide. So that gives an opportunity, a game point for Nike. That's a good thinking. Quickly came in, seeing that Nike was much behind the baseline and hurried up and hastened up that return very well on the forehand. Taking it to deuce. Trying to consolidate that early break of serve, Nike. Good deeper returns. That is what fetching that error on the forehand from Roberts there, the last point. That brings up another game point. Our service is really getting stretched now. Deuce after deuce, and now it is advantage Nike. This is a situation she should try to come with a good first serve and close out the game. But now she's up with a second serve. Not hurrying up the second serve. That's the right thing to do. See, the bit of pressure is being felt by her. High kicking, high spun serve, return into the net there. With that, she's consolidating that break of serve and going up 2-love in the opening set. Look at that serve, kicking up quite a bit there. A lot of spin on that serve. That is where Rawat was not able to handle it. See, Shri, Amondini just needs a simple strategy.
She needs to keep 3 balls in play. She will get negatives. And now this is not happening in 1 or 2 games. We've been seeing it in the last 1.5 sets so far. That is the strategy she has to look for, and serving at loud 2, decide a set. Good thinking, but not a great execution from Naik. Trying to go for that forehand up the line. Second serve. Good rally. Third love. Oh, that's a very good one here. Just going for that perfect forehand winner there. Now look at that long rally. Comes in quickly from the mid-court. Comes up with that thumping return. Thirty love. Trailing love 2 in the decider set. Rawat. Oh, it's a double fault. 30-50. 30-15. The first set was, in fact, both the sets I've been seeing a lot of trading of breaks of serve. That is a routine thing happening there. Absolutely. Not able to handle the bounce when he plays so close to the baseline. So there it is, the last point. You know, Shri, what I'm noticing, she may be the 4th seed, but she looks underprepared right now. Not played enough matches, looks like. What a lovely backhand down the line winner there. That is how she's pumping her fist. What a point to win. Have a look at that. Created that opportunity there. And look at that terrific backhand down the line. Still a game point, 40-30. Not getting any first serve in. First serve percentage has to improve certainly. That was absolutely unforced. She could have kept the ball in play. After losing that point, she so much from, of course, in the baseline. But she could have had the perfect angle there, but going on to the deuce. Her service is getting stretched. Oh, that's in. Very good attacking lob from Naik there. Saw the opponent charging the net and had a super control on that lob. Ball just landing on the baseline there. Have a look at that. Amondini is just doing the right thing by just putting the ball in play. Rest will happen on its own. Out ball. Just Deuce. None of the players are trying to do something different. They're just trying to wait for each other. There you see, that's a nice lob. Lovely shot. Deuce very important for Aditi to hold.
It's been quite some time since she's got a first serve in, Sri. Definitely struggling with that first serve. And it's a double fault as well. That brings up a break point too. This is where the psychology aspects come, mental toughness, lapse of concentration. Just. What a super shot down the line. She needs to play many more of these kind of shots. Absolutely. Have a look at that last point, how that down the line one goes. Superior control on the racket without taking it to deuce. First serve gets very critical when you're already down loud 2 or double fault. Yet another break point. Obviously struggling on her serves. You know, she's looking like that. She just doesn't want to win. What a comeback by the player from Karnataka, Amondini Dominates. Yeah, Losing the first set 4-6, getting a 6-4 in the second set. Lovely serve. Was it long? That's what Amondini believes. No, that's a nice, correct shot. Right, deuce. Just clipping the baseline there. That's why it's a deuce. Lovely serve. See, what's really happened, Aditi has not capitalized on Amondani's injury. When she saw that she had pulled a hamstring, she should have capitalized. It's been the other way around. Amondani is actually capitalizing on her lapse of concentration. Probably good work by the physio there. She came back stronger. Yes, that's true. Second serve. Double fault. What a way to drop the serve. So it's a 3-love lead. Double break up. I beg your pardon, it's in fact the deuce. Serving from the deuce court. That's long. There's a bit of disappointment or a bit of frustration there for the fourth seed. She should have got the ball in there. There you see. I can well understand what's going on her mind. She must be so puffed up. Nothing is going right for her at the moment. Facing another break point. Really, her service really not coming off well. Oh, with that a drop of serve happening, and it's a 3-love lead for player from Karnataka, Amondini Dominates. Up a double break. That should give her a lot of confidence. Losing the first set and in a similar score, getting the second set, getting the medical attention in between and coming back very strongly. Now she is up a double break and leading a 3-love with her own service to follow. Yeah, she's on the driver's seat now. She's cruising. She now believes that she can win. Aditi will have to do something out of her skin to come out of this hole and try to take the match. And it is not that Amondani has outplayed her. It is just that she just committed too many double faults, too many unforced errors. She has got advantage sometime, but she has not capitalized. And for a fourth seed to be struggling like this is not a very good scenario to see. She took the first set. There again, there were a lot of break-up serves, but then took it at 6-4 when she broke the service of Nike. But then dropped lost the second serve 4-6. Let's have a look at the highlights of the set so far. It is a 3-love lead for Amondini Dominates from Karnataka.
with up a double break. She is now serving at 3-love. All that she needs is to keep holding her serve to book a berth in the semi-finals. Let's have to continue to see the highlights. Pumping of fist, that's a sign of, the confidence level and morale boost. Plays back and forth, it's Amondini serving. Oh, good deep lob. Superb. That's a beautiful forehand winner by Amondini. Very high on confidence now. She took pace off that first serve, went for high kicking spun serve, long fault. A luck face, the always helps the brave, favors the brave. That's what we saw. That is a very good return of serve, very brave return. That is where the luck of the net card also counted there. If we can see Aditi coming back from here, that will show a true champion in her. Now, this is the time she needs to come out of this hole. Said that, another unforced on the backhand. 15-30. Mental training, Shri, is very, very important. Definitely. Just another 2 points to go for love. 30-15. Just a loose return of serve going long. That sets up 2 game points as well to go up 4 love for Amondini. This is where she can afford to go for a big fast serve. Not great pace on the serve, but believes in angle. The way she hits the ball, Aditi, if she can put many more balls, what lovely hand she's got. But that return of serve, just clipping the sideline there. What a return. So that is why still just a game point here. Oh, that's a very nice shot by Amondini. Just keeping the ball, keeping it going. Now she's cruising at 4 love after being 1 set all. I think she is now sighting victory. She can see a destination. Strongly appearing on the radar. Love 4. Raut has to do something extraordinary to make a comeback. No control on that back and cross court, just missing the sideline. Love 15, trailing at love 4 and love 15. Obviously the 4 seed under tremendous pressure now. Very good serve on the body, on the back and return going wide. 15 out. This is the kind of serve she needs. And These youngsters have to see this match again and again to reflect where they've gone wrong. She doesn't need to get disappointed, but she needs to take the positive out of this match. Because she herself will be shocked at the amount of unforced she's doing. She's just throwing the ball out. Not required. 15-30. You're right, either you win or try to learn. Rawat taking her time to serve under pressure at the moment. There's a good serve. Down the middle, return into the net. 30 all. No match is lost till the last point, and that she should tell herself that.
30, 40. See that return going so much into the doubles alley. Oh, that's long. Without another break-up serve, and it's a 5-love lead for Amondini Naik. It looks like it's going to end up in a bagel. It's 5 games to love. Final set. And the players get back after that odd game break. It will be Amondini Naik will be serving for the match at 5-love. What a comeback she has made. Losing the first set at 4-6, coming back strongly after the medical attention, taking the second set at 6-4. There she is. And then right now, comfortably, formidable lead at 5-love. All that she needs is to hold her serve and book a berth into the semi-finals. Yes, she just one game away. But said that, Shri, I would like to say that Aditi's potential is, there we see the last point replay. Let's have a look at the highlights of what has happened so far in the third set. There we see players taking their positions. Amondini already on the board. Amondini Naik serving for the match, serving at 5-love. Dropping the first set 4-6, taking the second at the similar score of 6-4. That she is serving for the match. Love 15. It's a lovely shot by Aditi. Pushing opponent behind, coming up to the net and finishing the ball. Absolutely, we were charging about baselines and then now charging the net early. That got that advantage for her to win the point. Oh, that loose forehand going long. 15 all. 15 all. There it is. All that Amondini Naik has to do is to hold a serve and book about to the semi-finals. That's wide. 15, 30. Just trying to go for the backhand up the line. The ball just landing in the doubles alley. Oh, that's out again. 15, It's 40. interesting. Not able to. Sometimes you always say that when you have to serve for the set or serve for the match, you tend to come under some pressure. That's what we see. There's no reason for her to come under pressure. She's 5-love up. She just needs to hold the serve. See, that's the game I say that Aditi has. She has the game. But Jesus made a mess out of the match so far. 5 games to 1. Final set. Absolutely. Look at that last point. Terrific, blistering back and cross court winner there. She's got a mountain to climb now. From 1-5 down, being in the third set. Oh, very well retrieved by Amondini. That was a good drop by Aditi, but very well retrieved by Amondini. Love 15. Taking her time. Not hurrying up. That's so very important. 1-5, love 15.
Very good put away from midcourt. The love from Amondini was not deep enough. And Aditi looking at that opportunity, charging in quickly. See, there she is at the midcourt. Superb control on that. 15 on. The ball just clipping the baseline there. That is why the pumping of fist. 15-30. Amondini Naik just 2 points away from wrapping up the match. Second serve. Good play by Amondini. Just keeping it on play, keeping the ball on play, keeping the rally going. And she would be gifted her points. Now she stands close to a match point. Correction. And that's an out ball. It's touching the line. It's clearly touching the line. 30-40. Amondini thought that she had won the match, but the ball was called in. That's unforced header. Deuce. Called for serve. And that's a double fault. Another match point to Amondini. Yes. Deuce. Saved 2 match points so far. Aditi Rawat from Haryana. Oh, that's a lovely shot by Aditi. Pushed Amondini on the forehand flank. Got a weak return, moved up to the net and finished the ball up. And that's an out ball with Aditi winning the game. Now trailing 5 games to 2. She was down 5 love. She's taken the last 2 games. Made a good comeback. And there you see the court where both the players are struggling. A very interesting match so far. We thought that Aditi Rawat would win in straight sets. She won the first set 6-4. Lost the second set 4-6. And now she's down 2-5. Shri, in between it looked that the ball was out and we could see Amondini walking in front
and the umpire called the ball in. I hope that can't. I hope it's not the turning point of the match. Should not lose concentration. It's a mind game. As the players are just back on court, as we always say that the momentum in whosoever favor it is, the person comes to the court first. And here it's Amondini serving. Good rally. The great thinking. That aggression is very nice. Is it coming a little late? Because she charged in very quickly and came with that forehand winner. Yeah, she's got nothing to lose. She just has to open up her hands and play now. Pendulum is shifting now. Love 30. I always said she's got a great game. Why couldn't she not play like this from very beginning? No unforced in this game so far. Love 40. 3 break points. $15.40. Yeah, she really didn't do much. She tried to keep the ball in play, but then the ball just hitting the high part of the net. Still 2 break points. Oh, that's a beautiful drop shot from behind. Amondini Nayak from Karnataka. 30-40. See the drop shot from so much behind the baseline. Still a break point. Out ball. Deuce from 40 love. Love 40. It's again a deuce. 3 good points to come back in this particular game. Amondini Nayak taking it to the deuce. That's long. Again going for a deep lob. Aditi needs to capitalize on this point. Very, very important. That will really make this match very, very interesting. See that to the second serve. She needs to go after this serve. She needs a little bit of luck from the top. The thinking was good and execution a little wrong there. The ball just missing the sideline there. Goes into the doubles alley and that's deuce. Lovely return. Advantage, Rawat. If she would have speeded up the game from the word go, and kept the ball in play, the story of the match would have been different. Another break point.
Rawat. That's game to Aditi now. For the side. Still training 3 games to 5 in the decider. And with her own serve to follow, if she can hold her serve, it will make it even more closer contest. Yeah, because see what's really happened is, when she was 5-love down, and she must have told herself there's nothing to lose, let's just hit, and she started getting things right. And now if she believes and she comes back in the match, it'll be fantastic for her self-esteem. Love 15. 3 games in a row there, and it's a good point here also. Lot of errors on a forehand. Lot of at the impact of the ball, her racket is stopping. The coach would need to look in this very deeply. The follow through is definitely missing. Yes. Now serving to stay in the match at 3-5 and serving at love 30. Good serve. Thoroughly miscued from Amondini racket. Have a look at it there. It went into the skies, landed within our court. 15-30. $15-40. 15-40, 2 match points. Let's see where the story goes from here. Oh, there the winner is on the forehand. Well played. Amondini Dominates from Karnataka. 6-3. What a match. Very long match. Both the players complementing each other. The score reading 6-4, 4-6. 6-4, 4-6, 6-3 in favor of Amondini Nayak from Karnataka. What a fantastic match. And there we see the last point. Oh, what a winner on the forehand. And there you see Amondini Nayak fisting a hand up and moving towards a well-deserved victory. Very well-deserved victory. What a match. And there we see the court. We will be seeing the next match between Ishaq Iqbal of SSB versus Nitin Kumar Sinha of West Bengal, which was supposed to start 11:30. We are already running 1 hour late. This match prolonged for nearly 2 hours. Until we don't commence the second match, we will be going off air and we will be resuming in another 10 to 15 minutes maximum.
थोड़ी देर में दूसरा मैच शुरू होगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला पुरुष वर्ग का क्वार्टर फाइनल, और वो लाइव प्रसारण लेकर हम आपके पास आएंगे। बने रहें डीडी स्पोर्ट्स के साथ। The chair umpire introducing the players to the audience. Chair representing SSCB, Ishaq Iqbal. Rider chair representing Bengal, Nitin Kumar Sinha. Nitin Kumar Sinha won the toss, chose to serve. चेयर अंपायर दोनों खिलाड़ियों का विधिवत परिचय कराते हुए यहां मौजूद दर्शकों से, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि नितिन ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने सर्विस करने का फैसला किया है। ये नितिन कुमार सिन्हा आपके स्क्रीन पर सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त है, और उनके सामने होंगे इशाक इकबाल, सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड के। नितिन सिन्हा जो कि मिक्स डबल्स में सेकंड सीडेड हैं, जुबरानी बनर्जी के साथ कल उन्होंने देर शाम को अपना मुकाबला खेला था। राइट हैंडेड प्लेयर्स हैं दोनों ही। नितिन काफी आक्रामक स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, और कल बहुत ही बढ़िया कोर्ट कवरेज उनका देखने को मिला था। कुछ सेकंड्स बाकी हैं प्रिपरेशन टाइम में, इसके बाद दोनों खिलाड़ी अपना अपना स्थान लेंगे और कोर्ट पर उतरेंगे। इस मुकाबले का आगाज करेंगे। बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर इस मैच के परिणाम का फैसला होगा। रोहित बलगावी जो कि इस मुकाबले के चेयर अंपायर हैं। पुरुष सिंगल्स, इसके पहले महिला सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल खेला गया, यहाँ पर पुरुष सिंगल्स का मुकाबला इशाक इकबाल और नितिन कुमार सिन्हा, सर्विसेज बनाम पश्चिम बंगाल। आज के दिन कुल 4 मैच निर्धारित हैं। आज के दिन का ये दूसरा मैच है जो अब से कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, और इसके बाद जो तीसरा मैच खेला जाएगा उसमें कोर्ट नंबर 1 पर देव जाविया जो कि सिंगल्स के टॉप सीडेड खिलाड़ी हैं, उनका सामना होगा उत्तराखंड के द्रोणावालिया से। आखिरी मुकाबला आज के दिन का कोर्ट नंबर 1 पर दिया चौधरी, जया कपूर उत्तराखंड के खिलाड़ी, सामना होगा पूजा इंगले और आकांक्षा नितुदे से जो कि महाराष्ट्र का प्लेयर है, और वो सेकंड सीडेड प्लेयर होगा। तो ये भी एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि 4 जो मैचेस यहां पर खेले जाएंगे कोर्ट नंबर 1 पर, उसमें एक या खिलाड़ी या प्लेयर सीडेड है और दूसरा खिलाड़ी या प्लेयर अनसीडेड है। और एक उलटफेर चीनी हमें देखने को मिला है, जबकि एक अनसीडेड खिलाड़ी अमोदिनी विजय नायक कर्नाटका की, उन्होंने पराजित किया सेकंड सीडेड अदिति को पहले मैच में। Absolutely, losing the first set at 4-6. I had a medical attention, came back 6-4 she took in the second set and wrapped up the decider set at 6-3. The players are on the court now, court number 1. In a short while from now, the quarterfinals in the men's section where Iqbal of Services Sports Control Board playing against Nitin Kumar Sinha, the third seed of West Bengal.
15 love. बहुत ही बढ़िया Line umpire. डाउन द लाइन फोरहैंड विनर, बैकहैंड विनर। ये देखें आप, डबल हैंडेड बैकहैंड विनर डाउन द लाइन, नितिन सिन्हा के रैकेट से निकलता हुआ। नितिन बहुत ही अट्रैक्टिव टेनिस खेलते हैं और स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं, जो कल मिक्स डबल्स में उनको खेलते हुए देखकर लगा था। इनिशिएटिव्स लेते हैं। 15 लव। all. 15 ऑल। फोरहैंड इनसाइड आउट, नेट पे उलझता हुआ। अच्छी रैली, दोनों खिलाड़ी बेस लाइन पर स्ट्रोक्स एक्सचेंज कर रहे थे। इशाक इकबाल को हमने सर्विसेज के लिए खेलते हुए देखा था टीम मुकाबलों में, और वो भी गट्सी प्लेयर हैं, आसानी के साथ मैदान छोड़ते नहीं हैं। व्हाइट टी शर्ट्स में हैं नितिन सिन्हा और ब्लैक टी शर्ट में इशाक इकबाल। अभी अभी इस मुकाबले का आगाज हुआ है। आज बेस लाइन से पीछे कॉल आता हुआ लाइन अंपायर का। हालांकि थोड़ा सा अचंभित से दिखे थे इस बार इशाक इकबाल, उनको शायद लगा कि बॉल बिल्कुल लाइन पर थी, लेकिन सच्चाई यह है कि निर्णय तब तक आ चुका था। 30-15 नितिन सिन्हा के पक्ष में। बढ़िया डीप सर्विस, अच्छी रफ्तार भी, दिशा भी बिल्कुल सही, लंबा होता हुआ रिटर्न। ये देखें, हालांकि पूरी तरीके से मौजूद थे रिटर्न के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो 2 गेम पॉइंट है नितिन के पास इस पहले सर्विस गेम में। एंगुलर सर्विस की कोशिश सर्विस साइड गैलरीज में। गेम पॉइंट हासिल किया और इसके साथ ही ये गेम जीतने में कामयाबी। नितिन सिन्हा ने अपनी सर्विस होल्ड की है। फर्स्ट सर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हम इसका जिक्र करते रहे हैं। नितिन ने कमोवेश एक जो कंसिस्टेंसी है पहली सर्विस की, उसको बरकरार रखा पहली सर्विस गेम में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इशाक इकबाल किस तरीके का खेल का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि नितिन जैसा हमने कहा कि काफी आक्रामक खिलाड़ी हैं, अटैक करते हैं। और कल तो ही वाज सीन अप्रोचिंग कोर्ट क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखना ये होगा कि क्या नितिन आज, कल तो मिक्स डबल्स खेल रहे थे, आज वो सिंगल्स खेल रहे हैं, तो क्या वही स्ट्रैटेजी रहती है या फिर वो बेस लाइन टू बेस लाइन वाला ही गेम कंटिन्यू रहता है। It's a different ball game, and let's see what happens here as Iqbal gets ready to serve. Love 1. Opening set. It all depends on, when you approach the net, you try to take control on the point. Love 15. Just trying to go for the backhand down the line, hitting it long. Iqbal, love 15. Any aggressive player would like to get the first opportunity to come to the net. But these days it all depends. Most of them prefer to play from behind the baseline, keeping the ball in play and waiting for the opponents to make those errors. Percentage tennis, not taking much risk. If you come to the net, you take a risk. Good second serve on the backhand. And the return into the net, 15 all. Nitin Kumar Sinha from West Bengal is seeded number 3 here. Seeding is important. Nevertheless, your performance on the day will matter. As Shivendra was telling, even in the first match, the unseeded player got the better of the opponent. The 4th seeded player from Haryana. A lot of bounce on that serve. That is where Nitin could not handle the return and hitting it long. There it is.
kick serve. 30-15. We have been watching quality tennis throughout the week. Good serve down the middle. Oh, this is really unforced because he had a good serve. The return was equally good, but then hurrying up the point, trying to close it out. You see, Iqbal is just coming in. When you try to come into the net, you carry your body weight. That is where you tend to overhit, and that makes it 30 all. Now serving from the deuce court. Second serve. Going for that inside out, super control on that. That is what makes it very exciting. Look at that, quickly moving in and see the whipping of the racket. That sets up a game point to level the scores. Iqbal serving. Trying to generate pace and try to go down the tee. Second serve. Out. Game Iqbal. One game all. See, this is where, in fact, the return had gone wide. And with that, Iqbal is holding his serve and the scores leveled one game all. Opening set of this quarterfinals. Played between Iqbal of Service Sports Control Board. He is taking on Nitin Kumar Sinha of West Bengal, who is seated number 3 here. It's game on in the opening set. And it will be Nitin Sinha who is getting ready to serve. The live coverage coming from court number 1. That is a loose backhand from Nitin. Goes into the net. Love 15. When you try to retrieve it very close to the body, this kind of errors do happen. You can't control, the return gets a bit loose. One all, love 15, the second serve. Nitin Sinha. Oh, that return just going long with the bounce on that serve. As he was just standing close to the baseline, couldn't handle that bounce, the return going long. Making it 15 all. Lovely rally. But in the end, that forehand, when you roll the wrist, you are trying to overhit it here. Nitin Kumar Sinha hitting it long. There it is. It was a very good rally. Trying to close it out on the forehand. Hitting it long. Makes it 15-30. It's a very important point always. These are the situation where you need to get a good first serve. Nitin Sinha. He did that. The ball was kicking up quite a bit right on the backhand corner. And the return just flying over the baseline, making it 30 all. Out. Oh, another good serve, wide serve. 40-30. Right on the forehand corner. Kicking up as well. Return going long with that. Is a game point, an opportunity for Nitin Sinha to hold the serve to go up 2-1.
Point. He's trying to nicely change the angles. The last serve was in the corner. Now try to go down the tee. Game. Nicely creating that angle, making the opponent run from flank to Sena flank, leads 2 games and to coming 1. with that thumping inside out forehand winner. With that, Nitin Kumar Sinha holds his serve and goes up 2-1 as the players get onto the chair before changing sides. I'm sure there is an interesting contest it is going to be. The first match in the court number 1, we saw going into the decider set. Now it looks like it's a very close contest as it is. Definitely, Srini, and I think the person who commits less number of mistakes will have the advantage, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अच्छे ग्राउंड स्ट्रोक्स लगाते हैं और उसका एक नमूना हमने देखा था जब इशाक इकबाल ने क्या बेहतरीन इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था। और नितिन सिन्हा की खासियत ये है कि बिल्कुल दोनों फ्लैंक्स का वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल में अपने सर्विस पे नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सर्विस गेम जीता। तो एज ऑफ नाउ ऑन सर्व है पहले सेट पे, और जो भी खिलाड़ी इन दोनों में से अनफोर्स्ड एरर को अपने से दूर कर पाएगा वो एडवांटेजेस पोजीशन में होगा। दोनों खिलाड़ी बेस लाइन पर बढ़िया खेलते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि नितिन के खेल में थोड़ा सा टेंडेंसी है कि वो ज्यादा अटैकिंग गेम के लिए जाते हैं, और अगर वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे अपने गेम पर तो शायद बेटर साबित होंगे। और जो सीडिंग मिली हुई है उसमें नितिन ऑफ कोर्स तीसरे पायदान पर हैं, जबकि इशाक इकबाल अनसीडेड प्लेयर हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इशाक इकबाल सर्विस के लिए तैयार होंगे 1-2 के स्कोर पर। बैकहैंड स्लाइस से ब्लॉक करने की कोशिश पॉइंट को, लेकिन असफल रहे। बेस लाइन से काफी पीछे दरअसल चले गए थे। डीप रिटर्न था इशाक का, और बमुश्किल तमाम कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अभी तक अच्छी बात है शीनी, वी हैवंट सीन एनी डबल फॉल्ट। Yeah, definitely. See, even the second serve, see how nicely he changed the pace. He went for a top spin serve, kicked a bit as well, and the return error, making it a 15 all. I think both the players, really looking pretty mature, not making any of those errors like a double fault or too many unforced errors. But they're also not trying to charge the net early. In fact, we've not been seeing much of it, even though it's a synthetic surface. But if you want to show some aggression, you have to create an opportunity to come to the net. Very good serve, clean ace. 30-15. Right on the forehand corner and swerving further away. Makes it 30-15. When we see that both, if the players are in the baseline, you try to go with some of those drop shots, or try to go with that some kind of a backspin. Balls. And with backhand slice, and then try to approach the net. When the opponent is made the baseline, you can go for it, but that doesn't happen much here. 40-15. Very good serve. Perfect angle. Right in the corner. That is where the backhand return going into the net. That sets up 2 game points to level the scores. Iqbal serving from the deuce court. Let's. First service. Both the players showing some good quality tennis. Not really hurrying up a point. A good rally, Yeah, but in the good end, ball.
Nitin is completely miscuing it, not hitting the sweet spot of the racket. Hitting it over the baseline. With that, scores leveled as Iqbal holds his serve. 2 games all it is. तो ये कहा जा सकता है कि दोनों खिलाड़ियों में से कौन बेहतर खेल रहा है, फिलहाल तो फैसला होना मुश्किल। नितिन कुमार सिन्हा पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी, तीसरी वरीयता प्राप्त, सामने इशाक इकबाल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के। They're trying to go for big first serves, but definitely they don't make double faults. In the second serve, they are taking care. इस बार इशाक को मौका मिला था, मौका खोया नहीं, उन्होंने बेहतरीन अप्रोच करते हुए इनसाइड आउट की शक्ल में पॉइंट को क्लोज किया। तो एक मिसक्यूट सा शॉट गया था नितिन के रैकेट से, जहां पर कनेक्शन होना चाहिए बॉल और रैकेट का, अपेक्षित कनेक्शन मिला नहीं, परिणाम स्वरूप फायदा मिला उनके अपोनेंट। Absolutely, that is what the ball is sitting up a bit and gave a good chance for Iqbal to go for it. क्या बोले कमेंटेटर कर्स, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया, मैंने भी पहले जिक्र किया। दरअसल उसका कारण ये था शीनी, बिकॉज वी हैव बीन कंटिन्यूअसली सीइंग द ब्रेक ऑफ सर्व एंड वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली, विच इज एक्चुअली क्वाइट अ वरीसम थिंग। एंड यहां हमने पहला डबल फॉल्ट देख लिया है। And that now is serving the sun on his eyes. So far he was controlling it. Whoever was serving from this side, you saw the first double fault. Lovely serve. The return was probably even better and flat. That is where Nitin returned going into the net. Look at that return of serve. नितिन अब अपनी ही सर्विस पर 3 ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सर्विस गेम में सब कुछ हो रहा है। आप डबल फॉल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो भी आ गया, और क्या ब्रेक भी आ जाएगा? इस सेट का पहला ब्रेक, या फिर नितिन बचाने में कामयाब होंगे? To come out of the pressure, he just went for a powerful serve. But fault, second serve. Oh, that's wide. So 1 break point saved. In fact, the court was wide open. He had every opportunity to go for that inside out, but then he preferred to go for the inside in and hitting it wide. Still 2 break points. कितना आसान मौका था इशाक के पास। एड कोर्ट पूरा खाली पड़ा हुआ था नितिन की साइड में। बहुत ही बेहतरीन सर्विस। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। कुछ वैसा ही कारनामा करके दिखाया है इस बार नितिन ने। बेहतरीन एस उनके रैकेट से। Perfect ace down the tee it was. The best players come out with the big serve when it matters the most. Still a break point. Jeez. 2 बेहतरीन एस लगाते हुए नितिन सराहना करनी होगी, दबाव से उबरे हैं और 3 ब्रेक पॉइंट बचाए हैं फिलहाल ड्यूस। 1 serve down the tee, the next one right on the back and corner. 2 aces, back-to-back aces to make it to deuce. बॉल ले लो जल्दी। So for on serve, we have to see a break of serve. Calls. तो 2 एसेज और उसके बाद एक डबल फॉल्ट। सब कुछ होता हुआ, जितने टेनिस के एलिमेंट हैं वो आपको इस पर्टिकुलर सर्विस गेम में देखने को मिल रहे हैं, और दोनों खिलाड़ी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बढ़िया सर्विस है, एसेज हैं, डबल फॉल्ट है, और
डबल फॉल्ट ऐसे मौके पर जहां बिल्कुल शायद नहीं होना चाहिए। एडवांटेज फिलहाल इशाक इकबाल के पक्ष में। ये एंटी क्लाइमेटिक अंदाज में इस गेम को आगे बढ़ाते हुए 3 एस लगा चुके हैं, जिनमें से नितिन के रैकेट से 2 एस तो बिल्कुल टी को किस करती हुई इस बार सर्विस गई थी। Absolutely. Facing a break point, come up with an ace down the tee. Deuce. Really, we get to see some quality tennis. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्मली जब आपको आप नेट पर आते हैं, आपको वॉली मिलती है, तो आप या तो क्रॉस कोर्ट का सहारा लेते हैं। यहाँ दोनों बार उन्होंने जो वॉली विनर की तलाश की, दोनों बार अपने अपोनेंट के बैकहैंड पर अटैक किया। इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एडवांटेज नितिन सिन्हा के पक्ष में है। एडवांटेज एक बार फिर से गंवाया लंबी रैली के बाद। फोरहैंड पर बेस लाइन से पीछे जाता हुआ शॉट, ड्यूस नंबर 3। लंबी रैली थी और दोनों ही खिलाड़ी एक एक बार अपना एडवांटेज गंवा चुके हैं। 3 एस लगाए हैं इस सर्विस गेम में नितिन ने, 2 डबल फॉल्ट किए हैं। काफी एम्बिशियस स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। डाउन द लाइन फोरहैंड पर विनर, आप देखें रिप्ले में, साइड लाइन को मिस करता हुआ साइड गैलरीज में। सिंगल्स के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, तो एक बार फिर से एडवांटेज अपोनेंट के पास, इशाक इकबाल के पास। Nitin service has been stretched and is under pressure, facing a break point now. Lovely rally. So the inevitable has happened. Iqbal lays 3 games. नितिन कुमार सिन्हा की सर्विस ब्रेक हो चुकी है। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने कोशिश बहुत की और आखिरी रैली भी बड़ी लंबी चली, लेकिन जो आखिरी फोरहैंड क्रॉस कोर्ट जो था वो नेट में उलझता हुआ नितिन का। तो इशाक इकबाल अब ड्राइविंग सीट पर हैं इस पर्टिकुलर सेट में, 3-2 की बढ़त हासिल कर चुके हैं। ये है नितिन सिन्हा आपके स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी, तीसरी वरीयता प्राप्त सिंगल्स में 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ITF फ्यूचर्स और चैलेंजर्स में खेल रहे हैं फिलहाल। मिक्स डबल्स में जुब्रानी के साथ कल अंतिम 16 का मैच खेला था और अंतिम 8 में पहुंच चुके हैं। इशाक इकबाल सर्विसेज की टीम के लिए खेलते हुए नजर आए थे कोर्ट नंबर 1 पर। ओवरऑल बैलेंस गेम अभी तक उन्होंने खेला है, लेकिन जो पिछला सर्विस गेम था काफी एक्टिविटीज से भरा रहा, जिसमें बहुत ही शानदार एसेस देखने को मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है श्रीनी, ऑल द 3 एसेस दे हैव कम फ्रॉम द रैकेट ऑफ ओनली 1 पर्सन, दैट इज नितिन कुमार सिन्हा, who eventually lost his service. That's the irony of it. He had a very big 3 aces, 2 down the middle and 1 in the corner. The 5th game, the break-up serve has taken place, and as the players get back onto the court, and it will be Iqbal who will be serving up a break. Whether he'll be able to consolidate that break-up serve, or will Nitin be able to break back? That's what we have to see now. Iqbal serves.
but that's long. Love 15. In fact, good full credit to Nitin on this particular point. Made the opponent run from side to side and then ultimately forced that error. There it is. You can see Iqbal had to move sideways from corner to corner and is now serving at love 15 from the ad court. Up a break. Not really hurrying up the serve. Correction. Return of serve, just missing the sideline there. For a moment, Nitin thought that might have clipped the sideline, but not to be so. So it's 15 all. Love 15. The point will be played again. That's a pretty close call. He had to stretch himself quite a bit. Good drop shot. Nitin just barged in towards the net, but really couldn't handle that low pickup. There it is, putting it into the net. See how much he has to cover the court there. That's why he couldn't really handle. 15 all. ऐसा सरप्राइज एलिमेंट जरूर होना चाहिए आपकी आर्मरी में। और ये बेहतरीन एस लगाते हुए इशाक इकबाल, जहां शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लीड को कंसोलिडेट करने का उनका प्रयास है। और ऐसे या तो ड्रॉप शॉट्स लगाएंगे या ऐसी बेहतरीन सर्विस करेंगे, तभी उनके पक्ष में ये सर्विस गेम जा सकता है। अपनी सर्विस होल्ड करेंगे तो ड्राइविंग सीट पर होंगे पहले सेट में। अच्छी सर्विस है, डीप सर्विस है, फोरहैंड कनेक्शन बिल्कुल बेस लाइन से पीछे जाता हुआ। 2 गेम पॉइंट अब इशाक के पास अपनी सर्विस पर। See, it's a very powerful serve. That is why the return just popped over the baseline. 2 game points to go up. भैया क्या कर रहे हो आप? Right now it's 3-2. There is a bit of a spectator movement, so that's it's held up for a moment. Two game points to consolidate the lead. Big serve down the tee, clean ace. With that, Iqbal goes up 4-2, consolidating that breakup serve which he had in the 5th game. Good quality tennis we get to watch in this court number 1. The 3rd seed, Nitin Sinha, coming under a bit of a pressure, having dropped the serve in his 5th game. Now he has to really hold this serve and then try to break back. That will be very important to stay in this opening set. Serving it down 2-4. He is the seeder number 3 here. And this is men's quarterfinals. Very good serve. Heavy spin on that serve, and the ball was kicking as well. That is where the Iqbal's return going into the net. 15 love. There it was. Down 2-4, 15 love, serving from the ad court. Nitin. Beautifully changing that angle, Nitin. That made all the difference. Touchy love. Quickly moved in and then saw that good opening there. That is what that forehand down the line from Iqbal going wide. Have a look at that. See how the opponent has been pushed from flank to flank. 30 love. Balls. Again, just going to farther to back and slice from where the baseline. Big ball just putting it into the net. That is a good rally.
in the end, just to see who is going to close it out. Look at that backhand slice. Not good enough. That gives 3 game points in favor of Nitin Sinha to narrow down the lead. These are all the situations where he can afford to go for a big serve, and he does it. Yeah. And he does it in Sinha. style. Clean New ace balls, please. right in the Watch backhand corner. With that, he holds his serve, but still a 4-3 lead for Iqbal. चौथा एस निकलता हुआ रैकेट से नितिन कुमार सिन्हा के। एक जोरदार एस लगाया गया है इशाक इकबाल के द्वारा। फिलहाल 4-3 की बढ़त है इशाक के पास। सर्विसेज के खिलाड़ी अनसीडेड हैं, उनके सामने है 3rd सीडेड नितिन कुमार सिन्हा। पुरुष सिंगल्स का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। बॉल्स चेंज की जा रही हैं, नई बॉल्स ली जाएंगी। चेयर अंपायर ने लाइन अंपायर्स को बल्कि बॉल बॉयज को सौंप दी हैं। After this permitted break after the odd games, let's have a look at what has happened so far in this set. Break of serve happened in the 5th game when Nitin Sinha dropped his serve. अच्छी बात यह है श्रीनी, वी हैव सीन सम गुड वेरी नाइस क्वालिटी स्ट्रोक्स फ्रॉम बोथ द प्लेयर्स एंड पर्टिकुलरली अगर आप ग्राउंड स्ट्रोक्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि नितिन सिन्हा का पलड़ा उसमें भारी है। और जिस तरीके से वो एक तो सर्विस बहुत बढ़िया करते हैं, दूसरा फ्लैंक्स चेंज करके जो क्रॉस कोर्ट और वो भी अच्छी स्पीड के साथ खेलते हैं, उससे अपोनेंट को परेशानी होती है। That's why it's quality tennis. Here the player is back on court. And it is Iqbal getting ready to serve. He's up a break. We'll try to consolidate that. Very good serve. See that spin, how the slice serve on the body, return into the net. 15 love. There it is. See that racket face when he's serving. That is where he is able to get the angle perfect. Little bit of a spectator movement again there. That's why he had to withdraw from serving. Now he's ready to serve. Now sun on the eye. Just that forehand error from Nitin. He, in fact, he just wanted to keep the ball in play, just wanted to give deep returns. But then a bit of a overheating there. See that one. 30 love. Nitin has to go after this serve. He has to take some chances because already he's down a break. Oh, it's a double fault. That makes it 30-15. And when you are down a break, you have to go on the attack. You have to go after the serve because you can't delay the break back. So you have to take some chances and then go after this serve. 30-15. Just slightly losing the range in the serve. Iqbal. It's overhitting. See, these are all the situations he has to take some chance. Perhaps he should consider just coming into the net. Just trying to go for that from so much behind the baseline. Hitting it long. So that gives 2 game points for Iqbal to consolidate that break of serve. See, the second service he has to attack Nitin in his point of view.
See that nice change of angle. Both the players initially going for the 4 and cross court, and suddenly he changed the angle, Iqbal. That is what fetched a point for him and give an important game. See, he stretched the opponent so much outside the baseline there, and then quietly changed that angle also, and then coming up with that clean winner. With this, Iqbal is going up 5-3, and Nitin is now serving to stay in the opening set, serving at 3-5. That's what we are just saying. He had to break the serve. He had to take little more aggressive action against Iqbal. So that didn't happen. And now he's serving to stay in the opening set. Right now serving at 3-5. He needs a good first serve. Let the break-up serve happened on the 5th game where Nitin dropped his serve. He needs to hold the serve because he's serving to stay in the opening set. And down a break. The return just missing the sideline, landing in the doubles alley. The reason was that the serve was, the bounce on that serve, kicking a bit. That is where the return going into the doubles alley there. Down 3-5, 15 love. Nitin. Very good return of serve and a loose backhand from Nitin into the net. 15 all. Look at that. He's hurrying up that backhand return, putting it into the net. Down 3-5, 15 all. Down 3-5, 15 all, the second serve. That's a very intelligent serve for a moment. Iqbal thought perhaps it was fault. It was not to be so. High kicking serve, a lot of spin on that. Look at the bounce there. That is where the return going wide into the doubles alley. There you are, Nitin. Very good serve down the tee, clean ace. In fact, he's serving quite a few aces. Of course, a few double faults also happen. But a crucial time is coming with that big serve. In fact, he needs to hold his serve because he's serving to stay in the opening set. But he has got 2 game points to narrow down the lead. He needs some more big serves. Good one. Oh, this was unforced. He tried to hurry up. He anticipated that, moved in a bit faster. There he is. That's why he's not able to control that. So, still a game point, 40-30. Not hurrying up the serve, the right thing. He needs to hold his serve as he's serving to stay in the opening set. Let. Having dropped the serve in the 5th game, you're seeing the pressure here. Not able to break back. The lovely serve down the tee, clean ace. This is what you need when you are under pressure. Narrowing down the lead, you are serving to stay in the set. And then holding his serve, and look at that big ace. With that, the lead is narrowed down to 5-4. And after the odd game, the players sitting in the chairs, when they come back, it will be Iqbal who will be serving for the opening set. We will be serving at 5-4. तो कुल मिलाकर के 6 एसेस लगा चुके हैं नितिन कुमार सिन्हा, जिसमें से 2 तो उन्होंने पिछले सर्विस गेम में ही डिलीवर किए। पैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन नितिन का, लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इशाक इकबाल जो कि आपके स्क्रीन पर हैं, थोड़े से ज्यादा लिटिल बिट मोर कंसिस्टेंट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ इशाक इकबाल। The highlights.
The breakup serve happened in the 5th game when Nitin Sinha dropped his serve. As a result of that, when the players get back onto the court, it will be Iqbal who will be serving for the opening set at 5-4. That's the highlight of what has happened so far in the set, and the players are just getting back onto the court number 1, which comes under live coverage in DD Sports. मौका होगा इशाक इकबाल के पास सेट क्लोज करने का, अगर वो ये सर्विस गेम जीतने में कामयाब होते हैं। वही नितिन जरूर प्रयास करेंगे कि 5वें गेम में उनकी सर्विस ब्रेक हुई है वो वापसी करें, अपोनेंट की सर्विस ब्रेक करें। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, डाउन द लाइन क्लीन विनर, फोरहैंड पर इशाक इकबाल के रैकेट से। बढ़िया सर्विस थी, कमजोर सा रिटर्न आया था, बिल्कुल मिडल ऑफ द कोर्ट में खड़े हुए थे नितिन सिन्हा। सुनहरा मौका अंक लेने का जिसे भुनाया इशाक इकबाल ने। 15 लव। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। पहले नेट पर आए, चार्ज किया इशाक, क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट खेला, लेकिन उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एंटिसिपेट किया। देखिए कितना खूबसूरत एंटिसिपेशन, रॉन्ग फुट किया पूरी तरीके से। और ऐसे ही कुछ स्ट्रोक्स की तलाश है नितिन सिन्हा को, अगर उनको बराबरी हासिल करनी है तो। Absolutely, what a court coverage. Moved in quickly, got the point. 15 all. Iqbal is in fact serving for the opening set. Serving at 5-4, 15 all. Oh, that's long, scooping that backhand return over the baseline. Just 2 points away from wrapping up the first set. See that backhand, scooping it long. Iqbal 2 points away from wrapping up the opening set, serving at 30-15, 5-4. ओवर एम्बिशियस स्ट्रोक्स एक के बाद एक लगाए नितिन सिन्हा ने। नुकसान उन्हीं को होना है, क्योंकि अगर यहाँ कंट्रोल्ड एग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन आप देखें लगातार बैक टू बैक पॉइंट्स पर वेंट फॉर अ वेरी बिग शॉट, और परिणाम स्वरूप इशाक इकबाल के पास इस समय 2 गेम और सेट पॉइंट है। 2 गेम और सेट पॉइंट। एक बार फिर से फोरहैंड पर गलती इनसाइड आउट की शक्ल में, और पहला गेम और सेट पॉइंट अपने कब्जे में करते हुए इशाक इकबाल 3 मर्तबा गलतियां की इस पिछले सर्विस गेम में। नितिन ने बहुत ज्यादा ताकत का समावेश अपने स्ट्रोक्स में करना चाह रहे थे, गलतियां करते हुए खामियाजा भुगता। पहला सेट 4-6 से हारे हैं, एक ब्रेक की बदौलत अपने पक्ष में करके इशाक इकबाल ने ओपनिंग सेट अपने नाम किया है। बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर फैसला होना है। तो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इशाक इकबाल अनसीडेड प्लेयर हैं और नितिन कुमार सिन्हा वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, तीसरी वरीयता प्राप्त हैं। पहले मैच में भी हमें ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था, जब अमोदनी विजय नायक कर्नाटका की, उन्होंने अदिति रावत हरियाणा की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 3 सेट तक चले मुकाबले में पराजित किया था। यहां पर भी एक गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इशाक इकबाल ने पहला सेट 6-4 से जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है। So the first set in favor of Iqbal from Services Sports Control Board, taking at 6 games to 4. There's a change in the commentary position as Shalindra Chaturvedi takes leave, and you see Dushan Singh is joining me.
And the players have just taken that permitted break before commencing the second set. The first set taken by Iqbal at 6-4. The break of serve happened on the fifth game. From there, Iqbal could consolidate that and then get away with that first set at 6-4. Good quality tennis we get to see, Dushyant. Yeah, Sri, definitely. What fantastic tennis we are watching. Hard hitting, consistent. Both the opponents trying to outdo each other. Some quality tennis. But the difference in this match is that one break made the difference. Whereas in women's tennis, there's a break in every game. Trading breaks of serve, we say. Yes. You know, that too was happening back to back. Yes. You go break the serve, immediately break back happening. Yes. And you know how long the match extended. Yes, because in competitive tennis and tennis at this level, the player is looking for that one break. And that one break got Ishaq Iqbal with this set. Because Nitin is a very good player, very seasoned. And I can see he'll come back. It's not that he'll let it go easily. I know Nitin's way. He's very cool customer, plays very precise. He's a consistent player. And definitely Ishaq, he said that. Ishaq Iqbal is doing fantastic. Big serving, first serve coming in. And he's really kept a good momentum going. This is where we always say that when you have a break of serve, good, but you should try to hold the serve that follows. Unless you consolidate the break of serve, it's not going to take you anywhere. That did not happen much in the first match which we saw in the women's singles quarterfinals. But now, very nicely after the break of serve in the fifth game, and there Iqbal was able to stay cool and wrap up the set at 6-4. Yes, we saw that, and there we see the court. Nitin has taken a timeout. I don't think it's an injury. It's a toilet break. It's a permissible break that he has taken. The court is playing very well today. It may be playing slightly slow, but perfect bounce, not a single bounce, which has been uneven so far. Yeah, it has been, and it's also pretty warm here during the day. And a lovely synthetic surface. And the court is quite fast. Very rarely we have seen some odd bounce. That can happen in any court. Yeah, I was talking to the services coach, Shri. His name is Shah Rukh Khan, same as the actor. And he said in the Services Sports Control Board, now they are planning to recruit a lady of officers, tennis players, and trying to build up a tennis team, which would do a lot of good for tennis in India, I thought. Absolutely. That is what is very interesting. There should be, players given some job opportunity and also more of a sponsorship. That will help them because when you have to play tennis at a high level, you need to be in the circuit and you need to play not only in India, you may have to travel abroad, pick up some points to go up the ranking ladder. So for all that, the support will be always needed, some sponsorship and encouragement from the, the corporates or from the local government or the center. That will be very important. One thing is that we have seen the government initiative in terms of encouraging the players at the grassroots level, giving them opportunity to showcase their talents and also sometimes play with the people with the better ranked, higher ranked players like your Khelo India Youth Games, Khelo India University Games and these national games. All this will throw open good opportunities for fine-tuning the talents of lots of youngsters. Yes, the initiative taken by the government at the center, at the state level, there has been a complete evolution as far as sports is concerned. But this is not the end. It has to go right because India lives in villages. Still 65 to 70% of the population lives in villages. We need to, the indigenous sports that they play there, they also need to be uplifted. There are a lot of Kendra Vidyalayas in villages where good sports infrastructure can come. The teachers need to be coached. The coaches need to be coached how to coach. If you don't know how to coach, then how do you show the path? So games have to be taken right to the grassroots level. And I think that, a good sporting nation will also reflect a good sporting good character of the nation. Absolutely. What you said is perfectly right in terms of training the coaches as well, because the coach's role will be always very important. You need to fine-tune the talent of
youngsters and upskilling them. For that, first of all, you should be able to identify what is our weakness, what is our strength, how do you leverage that strength, how do you try to cover up the weakness, how do you train them to make sure they go out of the weakness. One thing I've always been seeing is these days we don't find much of those backhands. Most of the players try to move to the left and convert the backhand into the forehand. Maybe the change of grip bothers them, but that is one area where I always think that people should improve. Now the players are back on court, and it is Nitin getting ready to serve, losing the first set 4-6. Change his t-shirt. Should bring a better luck, I guess, in blue. First rally on the baseline. Iqbal committing an error on the backhand. 15 love. Very cool customer, Nitin. Great serve down the line. 30 love. Left Iqbal completely stranded. Just managed to connect, touch the ball. Very wide serve. Going for the very wide angle. Oh, what a whipping forehand down the line. These are the kind of shots you must have in your arsenal. Fantastic. He was in the right position to go for that forehand down the line. The blistering one, as you said, that sets up 3 game points in the opening game of the set number 2 after dropping the first set 4-6. Nitin. Lovely serve. That is why the return going long. With that, Nitin holds his serve, going up 1 love in the openings as of the second set. Good start for him in the second set. Yes, badly needed. He needs to capitalize in this set as he's already 1 set down. You know, Shri, coming back while the players are taking their break, coming back to the thing we were discussing about no linesmen, only the chair empire, the AI technology. Have you got more insight of it? When does it actually get implemented in the ATP circuit and the Grand Slam? But I believe it's not very far since the time that they would be implementing this. No, absolutely, because artificial intelligence is taking over everything in life. So this is one area where they think that the precision can be there. So it is like no need for going for the DRS. Straight away you are right. Said that, we have Iqbal serving. Nitin made Iqbal move flank to flank, and that's how you construct points, and that's what youngsters watching this match, this is what they need to learn. Absolutely. Since you are talking about AI, and just I'm reminded of driverless cars. Oh yes, we've been hearing about that also. The world has changed in the last 20 years so much, is unbelievable. No line umpires, no drivers. Anyway, let's wait and see what happens on that. Back here in the court, number 1. A very good serve. Pace on that, but just missing the line. That is a desperate lob from so much from the baseline, behind the baseline from Nitin, just flying over the baseline there. Frantic attempt to keep the ball in play. More of a defensive lob. 15 all.
great serve by Iqbal, forcing Nitin to create an error on the forehand. I like the body language of Iqbal also. He's very peppy and he's ready to go. Very good serves. See, change of angle in the serve, down the tee now. Good rally, but in the end, Nitin trying to close it out, hitting it long. 2 game points, 40-15. Look at that forehand from Nitin. That's an unforced on the backhand by Iqbal. 30-40. He's still a point up to wrap up the game. Nitin, back of his mind, he knows that he has to break Iqbal somewhere down the line. Early breakups will always give a lot of confidence. In the first set, he dropped the 5th game serve. But again, a little bit of a spectator movement, so that's why he's withdrawing from serving. Iqbal. A great serve by Iqbal. Nitin not able to return the serve. The score reading 1-all in the second set after Nitin lost the first set 6-4. A nice warm day today, Shri, in Dehradun. I've not seen these temperatures since in the last 4 days. In fact, I read the forecast somewhere. They said it can go up to 25. And of course, as the day progresses, it cools off quite a bit. Drops to 10-11 round. Oh, that's a very costly double fault. Won't do good for his confidence. In fact, he has been serving some good aces, and there are also some double faults in his serve. Oh, that was a costly error after doing everything right. That is a very good serve. In fact, he opened the court with that serve. I think they're playing the point again, Shri. Why is that so? It's a close call. To me, it looked that it missed the sideline. Love 15. Replayed point. Now it is a second serve. It's a double fault. Maybe that last point disturbed his concentration, perhaps. Yeah, it does. These, if you delay slightly, you go out of your serving rhythm. Are we seeing a break here, Shri? You never know, because he's capable of serving aces when it matters. It was not right now. We have seen that under pressure he served well. Oh, that's a nice rally. Important for Nitin to get this point. Trailing 15-30 in this game. I feel he's going to go for a wide angle ace this time on his first serve. That's what my intuition tells me. He heard that. Oh, that was a costly error.
Shri, what is Nitin asking the chair umpire? I think everything was fair. What went wrong? It was a mistime return. I have to see the replay if I can. Because it looked point was fair. That's the chair umpire. It's a very difficult low pickup for him on the backhand. I can see Iqbal smiling. We'll need to really find out what went there because two break points, 15-40. That is where just missing the. This is where Iqbal is just trying to say that it landed on the wrong side of the spinal cord. But Nitin for a moment thought that he hit the line and he thought it was an ace. Having a look at the. I don't understand why are both players talking to each other. They're not supposed to do that. The lineup F has said that it's fault. And then they looked up at the chair umpire. So he has to serve at 15-40 game. And there we see a double fault. When your mind starts wavering, this will follow. Because he thought that the first one was an ace, probably that was bugging his mind, and then he's making a double fault here and dropping his serve as well. The first set he dropped his fifth game, dropped his serve. Now it is much earlier. Yeah. He's created pressure on himself. Now he's down 2-1, break of serve down. Break of serve happening here in the third game. And Nitin Sinha dropping his serve. He dropped the serve in the first set in the fifth game. And after that he could not get the break back and ultimately lost the first set at 6-4. Now he has to go for the break back early. And as far as Iqbal is concerned, he would like to consolidate that break of serve. Having taken the first set at 6-4, now leading 2-1, he would like to go up 3-1. So you can look for an interesting tussle when the players get back onto the court. Yes, Iqbal is looking very confident. One thing that I like about him, whenever he's in the court, his body language is very good. Good body language means you're giving positive energies to your body. The way he's walking around, he's very nimble on his feet. He's always bouncing. That is very, very important. And that's what we are all seeing. Said that, Nitin is a very seasoned customer. I can see him. He can make a comeback. But yeah, he's down a break right now. Remains to be seen. And Nitin is seated number 3 here. And Ishaq Iqbal from Services Sports Control Board. He has taken the first set at 6-4. Now he's serving at 2-1. And he's serving to consolidate that break of serve. Can Nitin break back? Lovely change of angle. And then going on that backhand, finding that opening in the court. And Iqbal getting that point in full control there. Going 15 love. Have a look at that, how nicely he has constructed the point. Stretched the opponent deep into the ad court there. And then came with that backhand winner. Oh, that's a great serve on the backhand. 30 love. He's hungry. He's looking hungry. He wants to win. And that is what is so important. Oh, what a serve down the line. Complete ace. Beautiful. 40 love. High on confidence, having taken the first set. Look at that serve. Big serve down the tee. Having taken the first set 6-4 and a break of serve as well on his beautifully constructed point. Opened the court with that serve. And Nitin is completely stranded there. And a very good backhand cross court winner there.
Look at that quick court movement, open court. So with that, he has consolidated that break-up serve which we are talking about and gone up 3-1 in the second set after taking the first at 6-4. And it is Nitin serving at 1-3. Oh, what a lovely inside out on the forehand. What a beauty to watch this kind of tennis being played by the player from West Bengal, and services giving a good show. How nicely he's changing that angle. Earlier one he opened the court with a white serve. Now he tried to go down the tee. Fault, of course. Yet again down the tee. Return going long and wide. Love. He needs to hold his serve, and what is even more important is to go after the opponent's serve, because he had dropped this serve on the third game. Very good serve. What a lovely serve down the line. Both the players playing extremely well. It's just that one small window which makes the difference. Oh, beautifully constructed. What a lovely backhand down the line. Pleasure to watch this kind of tennis, Sri. See how nicely he is opening the court with that serve on the backhand corner on the weak return, and very nicely put away into the open court. Good point to win. But what is more relevant now is to make sure he tries to get the break back early in Nitin's point of view. Yes, Nitin will need to push himself. He's down a break. He's also down a set. So if he needs to make a comeback, he needs to break. He needs to consolidate, try to break back. For him, the journey towards victory is a bit more far, whereas Iqbal is sensing victory now, and he'll be pushing himself. A lot of players, Sri, at this level playing in India. There must be a group of about 40, top 40 in the country must be all playing at this level. Yeah, definitely. What should really happen is how do they fine-tune their skills? See, that is where you have to make a very good analysis of strength and weakness, and the coaches play a major role in that. Oh, Shri, that is okay. Coaches will take them to a certain level. But what I'm trying to say, a group of the 40 top players, then they need one center where everybody is inducted on the same technology of learning, which will, I personally feel, will do a lot of good. Yeah, definitely that initiative will definitely help them. But first identifying those top players and nurturing them. That is where you can bring up a lot of players in the international circuit. Iqbal high on confidence after taking the first set 6-4. Oh, just scooping it wide. Yeah, over anxiety to close out the point. Iqbal is hitting it wide. My intuition tells me that Nitin will really push himself to break this game. He needs to do that. Having lost the first set and having dropped the serve on the third game. Oh, that was in. How nicely he changed the angles in the rally. Big ball. Looking pretty confident, staying very cool. At the moment in a very comfortable position, unless Nitin is able to break back. Nitin has to go after this serve. That's the only option. And as he hurried up the return, as he charged in a bit, that is where he's overhitting that return of serve. 30-15.
Good solid tennis we are watching on DD Sports. The coverage is coming from court number 1 here. Second serve, Nitin has to go after this serve. What a lovely shot on the forehand. Touchio. Deep down. You know, the best part of this match, what I'm enjoying, Shri, is whosoever is winning the point is actually constructing to win the point. There are not many negatives that are happening. Absolutely. Constructing it and closing it out well. We saw that very good inside out from Nitin to pick up that point. That made it 30 all. Now he has to really attack the serve, because otherwise it may get too late. He will definitely work hard. Good rally. The point going in favor of Iqbal. 40-30. He's got a game point now because of this. And that will give him opportunity to go up 4-2. Attack is the best form of defense for Nitin. He has to go after this serve before it is late. See, that is where he quickly moved, anticipated this serve down the tee. The return was sitting up a bit. That gave enough time for Iqbal to go for that forehand winner. Iqbal leads 4 With that, games he to holds his serve and going up 4 games to 2 in the set number 2, taking the first set 6-4. Look at that last point. That was sitting up a bit and comes with that forehand cross-court winner. He's on a roll right now. He's not letting anything go easy. Nitin trailing 2 games to 4. Good first serve by Nitin, 15 love. Another good first serve down the line, 30 love. Nitin just needs to hold his serve and then try to break Iqbal's serve. What a nice serve on the backhand. 40 love. Try to go down the line. And that's an out ball. Nitin winning the game. And now trailing 3 games to 4 after losing the first set 6-4. What an interesting encounter we're having so far, Street. Absolutely. This particular game, he could very comfortably hold his serve, Nitin. But when the players get back onto the court, Nitin has to definitely go after Iqbal's serve if he has to make a match of it. Yeah, he has no other alternative. He has only 2. Iqbal would be serving only twice. So he has to break one of it to get back onto the match. Otherwise, if Iqbal holds his serve, he would have gone 5-3 up. And then Nitin will have to serve to stay in the quarterfinals. That will be the scenario. So he has to go for breaking the serve, go after this serve.
This is the best opportunity. Nothing to lose. You have to go on attack. You know, the nerves will come into display if Iqbal is 5-4 up and serving for the match. That's where the nerves will show. I've seen a lot of players who are serving for the match have not been able to convert it. To an extent, I saw Novak and Federer play one of the Wimbledon finals, where Federer was totally in command, and on one very crucial point, he could not, he got broken, and it made all the difference. So even the top players, find it very difficult to close. It happens to Federer. You can imagine what will happen to, the other players who are not of belonging to that league. Players are just back onto the court. It is Iqbal who is getting ready to serve at 4-3. Really, Nitin has got a task on hand to go after the serve. He has to earn his points. Nothing will come free to him, that's for sure. Nice return. Error on the forehand of Iqbal. Love 15. Nitin well anticipated the serve on the backhand. Came with a big return. That is where Iqbal making that error. Love 15. Oh, what a return of serve. What a beautiful forehand. What inside out forehand. Love 30. I can sense a break happening. It's either he does it this time, or the match is slipping out of his hand. Love 30. It's a very big point. Iqbal point of view, he needs a good serve. It was a nice deep shot by Iqbal on the backhand of Nitin, forcing Nitin to throw the ball out of the court. 15-30. That's a double fault. We were talking about nerves, and nerves are actually now showing. Absolutely. This is setting up 2 break points. A great opportunity here for Nitin to go after this serve to try to get the break back, because the third game Nitin had lost his serve, and will he be able to make it up here? He has to go after this serve. Nothing to lose. Attack is the best form. See the pressure now really telling on Iqbal, making back-to-back faults. Oh no, that's a wild forehand. It's a wild forehand. He's doing everything right. He just needs to do 1 point correct. It's still 30-40. He saw that opportunity, seeing that Iqbal was way in the baseline, wanted to close it out with a powerful forehand cross court, but he dragged it wide. Still a break point. Shri, the ball is really kicking up to a good height now. Good comeback, very good comeback by Iqbal. After being down 15-40. In both these 2 points, Nitin was in a hurry to close it out. Good comeback, 2 good points for Iqbal to take it to deuce.
Nitin should go to attack the second serve. That is a very good deep return of serve, kicking serve, but then Advantage Sina. handled well. He needs one big serve now. Needs a very big serve. And great opportunity here for Nitin to come back in the set. Cheers. He did everything right, Shri, by moving Iqbal corner to corner. He just needed to come, and he should have played a drop shot. That See that net cord also disturbed his concentration. If you can look at that. And it's deuce. Iqbal really coming out of pressure for the moment. The second serve, Nitin should go after this serve in his point of view. Oh, what a lovely rally by both the players. Nitin really making Iqbal fight for every point. He's got the advantage now. Needs a big serve. To wrap up the game and go up 5-3. That will give him a very good, comfortable position in the match. And as far as Nitin is concerned, he had to stay focused and try to attack the serve. Second point, advantage Iqbal. And that's an error by Iqbal on the forehand. He's really making him work hard, Shri. He's not letting it go easily. Having dropped the serve on the third game, Nitin is now really working hard to get that break back before it is late. It's back to deuce. Up 4-3. Deuce. Set number 2. Iqbal serves. Was a double fault. That sets up a break point, and this is where an height of opportunity for Nitin to make a comeback. Pressure telling on him now. Let's see if he can come out of this. Great players come up with big serves when it matters most. And opportunity for Nitin. But definitely a big opportunity to attack the second serve. And there we are, and that's the break. And that's what good players are all about. Nitin did not let it go. And now we are the score reading 4-all in the second set after Nitin losing the first set 6-4. Shri, what do you see where the match is going from here? It looks to me that it could go to the tie break in the second set itself, because we saw the breakup serve happen in the third game where Nitin dropped his serve, and the eighth game now Iqbal has dropped his serve. If both of them hold the nerves, they will make sure that it goes to the tie break. Oh, beautifully picked up by Iqbal.
Wrongly judged by Nitin. He thought the ball is going, but the ball was very much inside. Love 15. It's an important ninth game. He has to hold his serve. Mistimed on the backhand on return of serve. 15 all. Beautiful inside out on the forehand by Iqbal. What a fantastic rally. 15-30. Iqbal is not letting anything go easily. We can look at that replay of the last point, how quickly he moved into his position, moved to his left, created that opportunity, go for the ripper of inside out. (15:30). Net. First service. Out. 15-40. This is an important ninth game, and Nitin facing 2 break points. And if he's going to drop the serve, it will be Iqbal who will be serving for the match. So he needs to somehow manage to hold his serve in his point of view. After doing all the hard work, again he's got broken. Now we have Iqbal leading 5-4. Very well fought back, I thought, from Iqbal after getting broken. Absolutely getting that break back so promptly. And he was in an attacking mood. And quickly moving into the position wherever it mattered. So when the players get back onto the court number 1, it will be Iqbal who will be serving for the match and trying to book about in the semi-finals. I hope our viewers and Doordarshan are enjoying this lovely match being played between Nitin Kumar of West Bengal against Ishaq Iqbal of the Services Board, Sports Board. And now we'll have, after this break, we'll be seeing Ishaq Iqbal serving for the set and the match at 5-4. Let's see how much he could capitalize. The break of serve in the 9th game when Nitin Kumar Sinha dropped his serve. That has helped Iqbal to giving an opportunity to wrap up the match as well. When the players just get back onto the court, it will be Iqbal who will be serving for the match. But pretty good tennis here. The scorecard always need not tell what happened here, but we saw a very good contest. Oh, what a lovely contest so far. Both the players are equally poised against each other. Iqbal getting ready to serve 5-4 and is serving for the match.
Beautiful forehand, completely surpassed Iqbal. He's got some very good ground strokes, Sri. I love the way he hits the ball. Clean, so clean. All youngsters watching must see that it is the timing which is most important, not the brute force behind it. When you get the timing, the racket, the ball lands on the sweet spot of the racket. Return just going long there. In tennis, we are well versed with the upsets that take place at top level, and we are about to witness one if Iqbal can hold on to his serve. Other turn just missing the baseline there. Replay the point. Replaying the point. Oh, that was a beautiful disguise on the backhand. He came, took his time and just disguised the opponent and got him on the wrong foot. I hope we get to see a replay on that. Oh, there we are. He comes, good racket preparation, and that's the outcome of the rally. Nice loop by Iqbal. Nitin's timing got affected because when you mix the timing, the timing, acceleration timing gets mixed up. 30 all. Just 2 points away from wrapping up the match. Iqbal as he gets ready to serve. Let's see how strong his nerves are to close the match. There we see an unforced on the forehand by Nitin. That sets up 2 match points for Iqbal to go on to the semi-finals. That's an out ball, and Iqbal winning 6-4, 6-4. What a lovely match, Sri. Absolutely, the score lines may show 6-4, 6-4, but then we did get to see high quality tennis from both the players. But compared to between the two players, Iqbal was a little more consistent and played the crucial points right and stayed a little more cool on the court. But definitely not to take any credit of Nitin Sinha as well. It is a very close contest and a very good game to watch for all of us. Yes, nice to see so much talent in the country. And there we see the court. We'll be starting with the third match very shortly.
तीसरा मैच अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा, महिला सिंगल्स का मुकाबला। और जैसे ही लाइव एक्शन शुरू होगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। आप जुड़े रहें डीडी स्पोर्ट्स के साथ।